Hello and welcome to the Pakistan Junior League 2022 draft. We've been talking about it, you must have heard about it, but today we are here finally on the sets. It's going to be amazing. We are all so excited. Roha alongside me. We will tell you what this league is all about and how it's different, how it's unique, and what will it bring for you, the viewers, and also what will it bring for the youngsters who have been dying to get into the big leagues, but they're too young. So what platform does this provide? We'll talk more about that. Definitely, Sikandar. We're all very, very excited because finally the day is here when we will get a chance to meet the players, to see who the players are, and of course, by the end of today, we will see how the 6 teams stack up, and that's what we're here for today, you know, to give a chance to all the coaches and all the mentors to pick their sides and make the best possible, or rather the next 11. Yeah. 6 teams are participating, as Roha said, and this will be in Lahore. It starts from the October 6th and it goes up to the 21st of that month. And 19 games will be played, and there will be a lot of talent will be featured in this platform. If you actually look at it now, I'll just give you a brief idea. 170 plus foreign players who are going to be in the draft, 250 plus local players who will be part of the draft, and finally 6 teams will be decided, 15 members or 15-member squad. And these are the categories here. The elite will be, of course, the 24 picks, 4 in each team. They are under 19 internationals, counties, or full member board players, or the first 11 players. Then the premier players, there are 30 picks, 5 in each team. These are the non-under 19 players who haven't featured in the country's under 19 squads. They can be from a county, they can be a full member board, and they can be part of the second 11 or regional teams. And then the X factor, these are the associates, 36 picks, and there'll be 6 players in each squad. So comprising of all these will be 15-member squad in each side. I'm going to welcome Farhan Nisar along with us, because Farhan is going to be our eyes and ears in all this, because he has a great knowledge about the youngsters. Farhan, first tell us, what do you feel as a statistician, as a person who follows the game, what kind of platform does this provide to the youngsters? देखिए सिकंदर, इसमें बहुत अरसे से इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि आप देखिए कि अंडर 19 में हमारे पास सबसे अच्छा टैलेंट होता है, लेकिन उसके बाद वो प्लेयर्स गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। लाइक शादाब खान जब अंडर 19 खेले हैं तो उसकी टीम के बाकी प्लेयर्स को नहीं आप जानते, तो 1-2 प्लेयर अच्छा पिक होता था। अब ये जो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इससे सिर्फ वो वर्ल्ड कप खेलने वाले प्लेयर्स ही नहीं, बाकी जो बहुत से प्लेयर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो हाईलाइट होंगे और उनकी लुक आफ्टर की जाएगी। पहले ये होता था कि वर्ल्ड कप के बाद फर्स्ट क्लास तक जाने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत से प्लेयर इधर उधर हो जाते थे, तो अब उन्हें एक राइट ट्रैक मिलेगा, पाथवे जैसे चेयरमैन साहब ने कहा जो 100 प्लेयर्स पिक हुए हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा अभी एक ट्रैक है। और PJL की वजह से वो एक होप आ गई है बच्चों में। अभी जो 12-13 साल के बच्चे हैं वो भी वेट कर रहे हैं कि हम कब इसका पार्ट बनेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा जो है खुशी बच्चों में पाई जाती है और एक होप है उनके लिए कि आगे एक उनके पास एक फ्यूचर है। नहीं, नो डाउट। और ये पाथवे प्रोग्राम की आपने बात की, क्विकली मैं आपसे एक और छोटा सा क्वेश्चन शूट करना चाहूँगी कि ये जो एसोसिएट मेंबर टीम के प्लेयर्स हैं उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा मौका है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर येट, तो एक उनके लिए भी यहाँ से एक जर्नी उनकी एक तरह से शुरू ही होगी टू ग्रेटनेस। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेस किया, क्योंकि अगर हम देखें हॉलैंड या स्कॉटलैंड इस तरह की टीम्स, इन्हें इंटरनेशनली जो इनकी जो मेंस टीम है उन्हें भी इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, आप लीग्स में उनके प्लेयर्स नहीं देखते, तो यहाँ पर होपफुली कि हम कम से कम एक प्लेयर तो उन टीम्स का देखेंगे और जब वो यहाँ पर आके खेलेंगे एक नया उनके लिए एक्सपीरियंस होगा और अच्छे लेवल की वो क्रिकेट खेलेंगे जो अपनी वो कंट्री में खेलते हैं, तो ये सबके लिए इसमें बहुत कुछ है। All right, so here we are, all set and ready, and we've got lovely Zainab Abbas, who's part of this as well. So she's going to take us through on the stage and tell us more about what's happening out there. Assalamu alaikum, everybody. If we could have everyone on their seats, obviously. Firstly, thank you so much to everyone for joining us here, because it truly is a wonderful occasion. Because we often talk about, you know, Pakistan ka future, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्यूचर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए. So I feel this is a great platform, the PJL draft, because we are looking ahead towards the future of Pakistan cricket and investing in the youth of Pakistan through Pakistan Junior League. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे हैं. So थोड़ा सा obviously हमने पहले भी explain किया है what this PJL is all about.
but we have 6 sides in a first-of-a-kind under-19 domestic tournament in the world. So, I think ये एक novelty factor ज़रूर है PJL का कि ऐसी लीग कहीं भी दुनिया में नहीं हुई जो कि ये चांस दे रही है यंगस्टर्स को कि उनको इस किस्म का एक्सपोजर मिले और वो क्रिकेट खेलें एंड ऑब्वियसली आगे जाके हम इन्हीं लोगों को देखेंगे एज द स्टार्स इन द नेशनल साइड्स. So the idea is really to identify outstanding talent, nurture them, and mature them into world-class products. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हर टीम के पास ज़बरदस्त mentors हैं, कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ नहीं भी हैं, but the idea really is कि वो अच्छी सी अच्छी टीम बनाएं, team composition, उन्हीं players को guidance दें, and उन्हीं को आगे जाके groom करें. These mentors that are involved in PJL, they are World Cup winners, they are Hall of Famers, they are national captains, and most importantly, they hold a legendary, iconic status. So once again, thank you so much, everybody. We're all really excited because, like I said, this is a unique product, and बहुत credit जाता है PCB को और सब everybody who's involved in this in bringing this forward. So without further ado, if I can please first of all call upon the CEO of PCB, Faisal Hasnain Sahab, to come and say a few words. Thank you, Zainab. Bismillahirrahmanirrahim. Chairman Ramiz Raja Sahib, distinguished guests, ladies and gentlemen, and boys and girls, Assalamu alaikum. Zainab, you've stolen a lot of my thunder because I think you've made the first half of my speech already. But I'm not deterred by that because I'll make that speech again. The Pakistan Junior League, the PJL, is the brainchild of our chairman, and today it's taking its first formal step towards becoming a reality. This was a concept about 8 or 9 months ago, and today, inshallah, it is moving towards reality. And we welcome everyone to today's player draft, which is the first step in what promises to be an exciting cricketing journey over the coming years. Now, what exactly is the PJL? Well, as Zainab preempted, this is a first of its kind cricket event, which the PCB is launching as part of its Cricket Development Pathway Program. That's important to realize. It's a development event, a cricket development event. This is a platform. It's a stage where young teenage cricketers from various cricketing countries will come together in a franchise-type cricket tournament. They will display their cricketing skills to the entire world. The PJL will also help to showcase the PCB and Pakistan's event management capabilities, as well as showcase the vast pool of cricketing talent that, mashallah, Pakistan possesses. Our ultimate aim is to identify outstanding cricketing talent at a very early age, to then nurture that talent, to then groom that talent, to eventually produce world-class cricketers. We also need to increase the pool of players who can then go on to represent their national sides. And
an important thing that we are trying to achieve is that success at this level can also help young cricketers to make cricket their career of choice. I would also like to emphasize that this league is not a commercial venture. It is not a commercial project whose ultimate aim is to make profits. No, it's not. Our objective for this league is to become an integral part of the PCB's Young Player Development Program. Now, having said that, when the world watches and witnesses quality cricket, coupled with high-quality broadcast and high-quality event delivery, we are confident that this tournament will attract investors. And all those funds will be plowed back into the further development of cricket in Pakistan. Remember that a big part of the PCB's responsibility is to reinvest its revenues back into the game of cricket and to create playing opportunities for its cricketers and to build the national team's bench strength. And the PJL does precisely all those things. Now, this first of its kind concept has received a lot of interest locally as well as internationally, and over 140 eager young cricketers from 18 countries have applied to join this league. This shows the encouragement that we have received for this concept from our fellow cricket boards around the world. And today, I thank all those cricket boards for their support. Now, I will briefly mention some of the highlights that will be on stage, on display. We will see high-quality junior cricket with teams from the cities of Gwadar, Hyderabad, Bhawalpur, Mardan, Rawalpindi, and Gujranwala, who will hopefully compete in front of full houses at the Gaddafi Stadium, Lahore, and with millions more watching on television. We will see legendary names as team mentors, names such as Sir Vivian Richards, Darren Sammy, Imran Tahir, Shoaib Malik, Shahid Afridi, Colin Munro, and of course, Javed Miandad Sahib. But, and I'm finishing soon, Chairman Saab, but at the center, at the nucleus of all of this, the reason why we are all here and the reason why we created this league are our young players who are sitting right there. Some of whose names may not be familiar to us today, but whose names will certainly be familiar to us as this league progresses. I wish all our young players the very, very best in today's player draft, and I wish them all well for this tournament. They are the future of Pakistan and the future of cricket in Pakistan and in their own countries. They must be encouraged, appreciated, and given the right opportunities within our system to grow into world beaters. And I am certainly proud and feel privileged to be here with them and with all of you as we embark at the start of this thrilling journey. Aap sabka bahut shukriya, and I thank you all. Thank you so much, Faisal Saab, for your wonderful thoughts. और अब वक्त आ गया है to call upon stage the brainchild behind the PJL, the visionary, जिनका ये idea है, concept है और passion project है. आपकी भरपूर तालियों में
the chairman of the Pakistan Cricket Board, Mr. Ramiz Raja. सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। सबकी स्पीचेस जो हैं वो एक दूसरे कर गए हैं असल में, मुझे समझ नहीं आती मेरे पास अब बोलने को रह क्या गया है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द यंग क्रिकेटर्स, टू द आइकॉन्स। कईयों के साथ मैं खेला हूँ, विव रिचर्ड्स के ख़िलाफ़ मैं खेला हुआ हूँ, जावेद भाई के साथ मैंने कई ग्लोरियस मोमेंट्स शेयर किए हैं। शुएब मलिक जो हैं वो एक आइकॉन है, मॉडर्न डे स्टार हैं। इसी तरह से शाहिद आफरीदी के कई गोल्डन मोमेंट्स हमें याद हैं। तो मैं बच्चों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप बेहतरीन कंपनी में होंगे यहाँ पे, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि इनसे सीखें और इस एनवायरनमेंट के थ्रू आप ग्रेट प्लेयर्स बने। सबको मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, ख़ास तौर पे जो कि ड्राफ्ट में जितने भी बच्चे हैं और अपने जो लोकल आइकॉन्स हैं, मैं देख रहा हूँ समी हैं, रज़ाक हैं, इजाज़ बैठे हैं, मुशी भी हैं यहाँ पे, इमरान फ़रद भी हैं। आपको भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास लगन है, कमिटमेंट है और सच्चाई है। ये जो गेम है ये सच्चाई की है, और यंगस्टर्स को ये फील कभी भी नहीं हमने होने देना कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। तो इसीलिए हमने चुन के बेहतरीन माइंड्स और सच्चे लोग यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पाकिस्तान जूनियर लीग इज़ वेरी सिंपल. It is a platform for all these young kids to become champions. It is a platform to showcase Pakistan's generation next. It is a point in case where we are trying to help socially certain players who come from obscure areas, from far-flung areas of Pakistan that do not necessarily get opportunities. So आपके पास opportunity है ना सिर्फ क्रिकेट खेलने की, बल्कि एक आमदन का ज़रिया भी हम आपको एक यंग एज में दे रहे हैं, ताकि आपके घर से प्रेशर ऑफ हो जाए और आप खुल के क्रिकेट खेल सकें। और हम माशाल्लाह से इस मुकाम पे हैं जहाँ पे हम आपको इस तरह के मॉडल में इंक्लूड कर सकते हैं। सो आपकी तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत, क्योंकि सारे पाकिस्तान से आप लोग इकट्ठे होंगे, बाहर से प्लेयर्स आ रहे हैं, आप उनसे सीखेंगे, वो हमसे कुछ सीखेंगे, हमारे कल्चर को जानेंगे। सो आप सारे एम्बेसडर्स होंगे पाकिस्तान के, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर से एक मैं बात करना चाहता हूँ जो कि मुझे जब मैं क्रिकेट खेल रहे थे तो बड़े पहले हमें समझा दी गई थी कि क्रिकेट खेलेंगे तो सारी चीज़ें फॉलो करती हैं। स्टार बनेंगे तो पैसा आता है, स्टार बनेंगे तो नाम होता है। अगर आपका किबला कहीं भटक जाता है तो आपकी सब चीज़ छूट जाती है। सो आप कंसंट्रेट करें सिर्फ ग्रेट प्लेयर बनने के लिए, और अगर आप ग्रेटनेस की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बाकी सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, आपके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे। पाथवे प्रोग्राम जो हमने लॉन्च किया हुआ है उसमें से भी बच्चे आ रहे हैं और आगे चल के माशाल्लाह से जूनियर प्रीमियर लीग का वो हिस्सा बनेंगे। आइडिया सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूं कि एक बच्चा जब 10 साल का हो तो उसको आइडिया हो कि उसने आगे चल के अगर क्रिकेट खेलनी है तो उसके लिए प्रोग्राम क्या है। और जब तक कि ये प्रोग्राम प्रोफेशनल तरह से हम रन नहीं करते हैं और उसको कुछ राह नहीं दिखाते हैं, तब तक हमारा यंग टैलेंट आएगा नहीं और उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। सो इस लिहाज से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जब आप पाथवे से बाहर आएंगे तो फिर आपको जूनियर लीग का ये प्लेटफॉर्म मिलेगा। इससे आगे जाएंगे तो आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट वहाँ खेलने का मौका मिलेगा जहाँ वहाँ भी पैसे हैं। उसके बाद आप PSL में जाएंगे और फिर पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह खेलेंगे। सो आपके लिए कि हमने पाथवे रोड क्रिएट की है और ग्रेट एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है जहाँ पे आपको मैक्सिमम चांस हम दें टू अचीव एक्सीलेंस। एक दफ़ा फिर सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइडियली तो मैं चाह रहा था कि इसको मैं पाकिस्तान जूनियर लीग नहीं बल्कि वर्ल्ड जूनियर लीग बनाऊं, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल इंटरेस्ट है। आगे चल के
देखते हैं मॉडल कैसा ये निकलता है। ये हमने जान के जो ये एडिशन है, क्योंकि ये प्रोटोटाइप एडिशन है, दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, सो वी वांटेड टू टेक एब्सोल्यूट ओनरशिप of this model. We had investors who wanted to invest in this junior model. We decided that we need to first know ourselves where we stand with this model, with this project, because there'll be international kids who will be coming to Pakistan also, since it's important to understand what they want. And we don't want our kids to be under any kind of pressure when they're representing a franchise owner. So हम ये चाहते हैं कि आप लोग तसल्ली के साथ खेलें, पैसा हम लगाएंगे इस एडिशन में और फिर आगे चल के देखते हैं इस मॉडल को और इसमें कैसे निखार ला सकते हैं, मगर इवेंचुअली फ्रेंचाइज ओनर्स को लेके आएंगे जब हम सेटिस्फाई होंगे कि हमारे मकसद के फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, क्योंकि ये बड़ी डेलिकेट उम्र है बच्चों की। हम नहीं चाहते हैं कि खाम खा से प्रेशर में आके और एक तरह से कॉन्फिडेंस में क्राइसिस आ जाए। तो आप खुल के खेलें, और आपने देख ही लिया है कि पैसा है और अच्छा खासा पैसा है फॉर 15 days ऑफ वर्क। हम इसको प्रोफेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने सारे सेटअप को, और ये एक छोटी सी उसमें एग्जांपल हम क्रिएट कर रहे हैं, और मैं उम्मीद यही करता हूँ आप दिल लगा के खेलेंगे, खुल के खेलेंगे और एंजॉय करेंगे, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। सो एक प्लेटफॉर्म है, इसको एंजॉय करें और हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। एक दफ़ा फिर सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच चेयरमैन साहब। आई होप इसी तरह ये सक्सेसफुल PJL आगे जाके हो। तो आई थिंक अब जो है वो टाइम आ गया है, टीम्स के ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं, लोगोज सबके अनवील करते हैं। सो जो हमारी पहली टीम है आज की, बहावलपुर रॉयल्स यहाँ पे मौजूद है। इनके मेंटोर बाय द वे हैं इमरान ताहिर, उनका मैं किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, एवरीबडी नोज हिम। And then if I can please first of all call upon their head coach Gordon Parsons and their batting coach Imran Farooq on stage so that we can unveil the logo. Thank you so much. इधर ही ठीक है। जी, if I can please unveil the logo of Bahawalpur. Thank you so much. चले, मेरा ख्याल है दूसरी टीम जो है गुजरावाला जायंट्स, जिनका नाम है, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच गाइज, यू कैन रिटर्न टू योर सीट्स। इट्स जस्ट अबाउट शोइंग एवरीबडी कि यहाँ पे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं इन द टीम्स। सो गुजरावाला जायंट्स मेरे सामने हैं, गुजरावाला जायंट्स के मेंटोर सामने हैं, हंसते मुस्कुराते शुएब मलिक साहब। और हमें पता ही है शुएब का कि जब वो टीम के साथ भी होते हैं तो ही इज़ वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स ऑल द यंगस्टर्स, एवरीबडी टॉक्स अबाउट दैट। सो अ ग्रेट मेंटोर टू हैव। And इनके head coach हैं इजाज अहमद साहब, and Azaz Cheema is the bowling coach. So if I could please call you both on stage, and then we can unveil the logo of Gujranwala Giants. जी प्लीज अनवील कीजिएगा गुजरावाला जायंट्स। थैंक यू सो मच एवरीबडी। आप लोगों का आज बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए आई एम नॉट गोना कीप यू ऑन द स्टेज। और जो अगली टीम है वो है गवादर।
उसका जो लोगो है अभी हम शॉर्टली अनवील करते हैं. मेंटोर उनके हैं विवियन रिचर्ड्स, द ग्रेट Vivian Richards. What a mentor to have. I mean, I don't think I need to say much about that. We've seen him around and the kind of obviously experience he has जो कि वो आगे pass on कर सकेंगे. Truly जिसे कहते हैं ना, the king Viv. इनके head coach हैं मुश्ताक अहमद साहब, baton coach कामरान खान, and if I could please call upon the head coach Mushtaq Ahmed and Kamran Khan to come on stage so that we can unveil the logo. चलें जी, अनवील कीजिए. गवादर शार्क्स, ज़बरदस्त लोगो है जी. और थैंक यू सो मच. ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस यहाँ पे खड़ा है स्टेज पे, विच विल रियली हेल्प आउट ऑल द यंगस्टर्स दैट आर प्लेइंग इन दिस टीम. अच्छा जी, नेक्स्ट टीम है हैदराबाद की और इनके मेंटोर हैं डैरन सैमी. अगेन somebody we've seen him generally PSL में भी आपने उनको देखा होगा, but the kind of influence that he has, gets along with everybody, has loads of experience and leadership experience भी है उनके पास. Then head coach उनके हैं अब्दुल रज़ाक साहब. उनके बारे में भी मैं क्या ही कहूँ, सबको पता ही है उनका ऑलराउंड एबिलिटीज़ का जो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कंट्रीब्यूशन किए. गुलाम अली बहुत कंट्रीब्यूट कर चुके हैं बैटिंग वाइज, बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारे प्लेयर्स उनसे. सो थैंक यू सो मच, दे आर कमिंग हियर. इनका भी अगर हम अनवील कीजिएगा लोगो, सो वी कैन हैव अ लुक एट व्हाट इट लुक्स लाइक. देयर इट इज, Hyderabad Hunters. Thank you so much. Thank you so much. सारी ये जो टीम कॉम्पोजिशंस हैं बहुत मज़े की लग रही हैं. I have to say that plenty of experience is there. अगली जो टीम है that is मर्दान की and उनके मेंटोर हैं शाहिद आफरीदी. Again इनके बारे में तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. Everybody knows his name, his experience. हेड कोच साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे अब्दुल रहमान एंड बॉलिंग कोच मोहम्मद समी. इफ आई कैन प्लीज कॉल यू ऑन स्टेज एज वेल, ऑल ऑफ यू, ताकि हम इनका भी लोगो जो है वो अनवील कर सकें. अब्दुल रहमान साहब का तो सबको पता ही है, इतना एक्सपीरियंस है इनका कोचिंग में एंड एवरीबडी स्पीक्स रियली हाईली. सो थैंक यू सो मच. एंड अब टाइम आ गया है कि हम इनका लोगो अनवील करें. थैंक यू सो मच. मर्दान वॉरियर्स, लविंग द नेम, आई हैव टू से, जबरदस्त नाम है जी. और अब अगली टीम which is the last team of the day is Rawalpindi. And इनके mentor हैं Colin Munro. What a mentor to have. Everybody knows, everybody's seen him play his cricket. And definitely we'd be needing that kind of cricket in this PJL as well. We've got Julian Wood here. और Toby Radford जो हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो उनके coach हैं. But we also have Mohammed Masroor as the batting coach. So if I could please call you guys upon the stage. And then we can unveil the logo of Rawalpindi Raiders. थैंक यू सो मच. और ये हैं आपकी सब टीम्स के लोगोस. आप लोगों ने देखा होगा, वेरी कलरफुल. आई एम लविंग ऑल द नेम्स एंड ऑब्वियसली एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन दिस, आई एम श्योर दे विल ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल. अच्छा जी, आई थिंक अब
crunch time आ गया है. We need to start the actual draft. थोड़ा सा आपको already explain किया होगा, जो आप लोगों ने देखा होगा, but there are 3 categories. There is Elite, Premier, and X Factor. There's going to be 4 rounds of picks, and there are 24 spots up for grabs. चलें जी, पहली जो पिक है, पहली पिक वो है गुजरावाला जायंट्स की. यहाँ पे बैठे हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब. This is the first pick of the day. गुजरावाला जायंट्स के पास मौका है कि वो इस ड्राफ्ट की शुरुआत करें. Obviously have the advantage of picking some really talented youngsters. Elite category है. Categories का आपको already explain कर चुके होंगे. Already शुरू में briefing मिल चुकी होगी जो लोग देख रहे हैं ये. वो ड्राफ्ट में नहीं. अच्छा. स्टूडियो ने बता दिया फुटबॉल का. विल रिपीट इट बीच में. जी, फर्स्ट पिक है अली असफन. बहुत बहुत मुबारक हो गुजरावाला जायंट्स को. लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और बहुत ऑब्वियसली हमने इनको देख भी लिया हुआ है. लेफ्ट आर्म स्पिनर आजकल आपको पता ही होगा टीम्स में मौजूद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस शॉर्टर फॉर्मेट में. तो बहुत बहुत मुबारक हो अली असफन को. पिक नंबर 2 जो है वो है फॉर मर्दान वॉरियर्स. मर्दान वॉरियर्स यहाँ पे मौजूद हैं. एंड मर्दान, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, thank you, Zainab. Here we are. So the first pick has gone through for the Gujarat Giants, and they've picked up Ali Asman, the left arm spinner. I've got, of course, Farhan Nisar alongside with us. थोड़ा सा इन पे लाइट डालते हैं. अली असमन पे अच्छी पिक है और उनका एक्सपीरियंस भी है क्योंकि ये एलीट कैटेगरी है. थोड़ा सा इस पे और थोड़ा सा हमें डिफाइन करें अली असमन के बारे में. अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं और अभी हम नेशनल T20 में थे तो वहाँ पर भी ये सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं. और इनका जो बॉलिंग एक्शन है वो जुल्फ़िकार बाबर से काफ़ी मुशाबत रखता है. काफ़ी वो उनको इनसे इंस्पायर है. फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है और जो टॉप नाम है हमारे अंडर 19 के इस वक्त पाकिस्तान में उनमें से एक नाम है. और ये बड़ी अच्छी ये पिक है जो गुजरावाला ने की है. उनकी जो पहली पिक थी उसका पूरा फ़ायदा उठाया है और जो चंद बड़े प्लेयर्स हैं इस एलीट कैटेगरी में उनमें से एक प्लेयर को पिक किया. राइट फरहान, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहली पिक जो है वो एक स्पिनर की हुई है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की. व्हाट डज दैट से अबाउट वेयर व्हाट डायरेक्शन दिस ड्राफ्ट विल बी टेकिंग और टीम्स क्या सोच रही हैं? देखिए, शोएब मलिक इनके मेंटोर हैं गुजरावाला के. तो इतनी ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट खेली है, 400 प्लस उनके T20 मैचेस हैं और स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो पहले मैंने बात की है कि ये जो चंद गिने चुने नाम हैं जो बड़े प्लेयर्स में शुमार होते हैं अंडर 19 के इस वक्त, उनमें से एक नाम है. तो पहली पिक का पूरा फ़ायदा उठाया और बहुत अच्छी पिक की है गुजरावाला जायंट्स ने. डेफिनेटली. अभी देखते हैं नेक्स्ट पिक जो है वो कौन सी होती है. थोड़ी डिलिब्रेशन हो रही है बिकॉज ज़ाहिर है एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ये एंड ऑल द पिक्स हैव टू बी
थोड़े फर्स्ट पिक जिटर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं टीम्स में, क्योंकि ज़ाहिर है आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, मतलब जितना भी एक्सपोजर अभी तक इन प्लेयर्स का है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको ये फैसले करने हैं कि आपकी टीम में जो 15 की टीम है उसमें कौन से प्लेयर्स होंगे। इसमें मैं ये कहूँगा कि जो टीम के साथ जो इनके एनालिस्ट हैं, वीडियो एनालिस्ट, ये लोग क्रिकेट में इन्वॉल्व रहते हैं, ख़ासतौर पर जूनियर क्रिकेट में। अभी हाल ही में अंडर 19 का कप भी हुआ और चैम्पियनशिप भी हुई, तो उन लोगों की इनपुट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। चलें, ज़ैनब Warriors have picked, so let's see who it is. अच्छा जी, मदान वॉरियर्स ने अपनी एलीट कैटेगरी में पिक किया है। प्लीज इफ वी कुड प्लीज हैव द नेम। Okay, just a couple of seconds where we get the name through. जॉर्ज थॉमस जी राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। इनका नाम जो है अंडर 19 क्रिकेट में बहुत मशहूर है, ओपन भी करते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। सो यू नो a huge addition because he scored a lot of runs in the under 19 format. चले जी, ये तो हो गई आपकी मैदान की पिक। अब टाइम आ गया है हैदराबाद हंटर्स का एलीट कैटेगरी में, और आपका टाइम शुरू होता है अब। There we are. You look at Abdul Razak there, Ghulam Ali there, and busy in getting their first pick going. But just for the knowledge of the people who are joining us, Pakistan Junior League, the first edition, involves 6 teams. And out of these 6 teams, there are categories that have been divided. There's an elite category, and we are into that at the moment. Elite category players are being picked, and then you have the premier category, and then you have the X Factor category. Focusing on the elite category, you have 24 picks altogether in the 6 teams, and 4 spots per team. Let's talk about the pick that just happened over here, and I think Farhan will tell us more about him. George Thomas, tell us about him. कैसी pick है ये? इंग्लैंड के ये बैटर हैं, जैसा भी ज़ैनब ने बताया कि अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है, तो जो फॉरेन प्लेयर है उनका जो बेंचमार्क सेट किया गया वो अंडर 19 वर्ल्ड कप है, क्योंकि किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता। तो एक अच्छी पिक है, मर्दान का स्टार्ट अच्छा है। चले, अच्छा जी, टाइम इनका ख़त्म हो गया है हैदराबाद हंटर्स का। और क्या है जी, रिवील कीजिएगा इनकी क्या पिक है एलीट कैटेगरी में। राइट, साद बेग जी, इनका सिंध से ताल्लुक है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन, एंड बहुत ही टैलेंटेड है। सो ऑल द बेस्ट टू हैदराबाद हंटर्स। चले जी, अब टाइम आ गया है अगली राउंड, ऑब्वियसली राउंड में तो वही है, बट अगली टीम का, अगली पिक का। एंड अगली पिक है रावलपिंडी रेडर्स की। सो रावलपिंडी, आपका टाइम शुरू होता है अब। ये साथ भी एक जो क्लैपिंग आपने सुनी है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कितनी बड़ी पिक है जो हैदराबाद ने की है। कराची से इनका ताल्लुक है, कीपर हैं और साथ बैटिंग करते हैं। और अभी हाल ही में जो सिटी क्रिकेट हुई थी उसमें एक वनडे मैच में इन्होंने 250 प्लस रन्स किए थे। तो रन्स मशीन इन्हें हॉट पिक जो है, मतलब आज की वन ऑफ द हॉट पिक्स हैज बीन ड्राफ्टेड। जबरदस्त। चले, ये डेलिब्रेशन जो थी इसका ये मुझे लगता है यही डिसाइड हो रहा था, बिकॉज ज़ाहिर है हॉट पिक्स जो हैं, यू नो, अ नंबर ऑफ हॉट पिक्स टुनाइट, और साद पिक इज वन ऑफ देम। ज़ैनब इज रेडी विद द नेक्स्ट पिक। थैंक यू सिकंदर एंड रोहा। अब रावलपिंडी रेडर्स ने अपने टाइम से पहले ही पिक कर लिया है, तो दिखाएं जी क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट पिक, इफ वी कैन प्लीज हैव अ लुक। हबीबुल्लाह साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, राइट हैंडेड बैट्समैन, कंग्रेचुलेशंस। और वहां पे सेलिब्रेशंस भी चल रही हैं, बिकॉज वी हैव सम ऑफ द यंग स्टार्स सिटिंग इन द बैक। रिमेंबर, दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा जी, अब टाइम आ गया है बहावलपुर रॉयल्स का इन द एलीट कैटेगरी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
mystery bowler Ahmed, and we also have him here. Mystery bowler क्या? So he bowls off as well as leg. जी दिखाइए बहावलपुर रॉयल्स ने अपनी क्या पिक की है एलीट कैटेगरी में। अरहम नवाब यहाँ पे मौजूद हैं और अंडर 19 के स्क्वाड में भी हैं। ही इज अ मिस्ट्री बॉलर। आपको पता ही होगा आजकल मिस्ट्री बॉलर्स की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेग स्पिन भी करा लेते हैं, ऑफ स्पिन भी करा लेते हैं। बहुत खुश हैं कि उनको इस किस्म का मौका मिल रहा है एंड व्हाई नॉट। राइट, वी आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स गवादर शार्क्स। आपका टाइम शुरू होता है अब। Okay, here we are. So we got very limited time, so I'm going to welcome Mr. Ramesh Raja, the chairman of Pakistan Cricket Board. Probably the only opportunity where I can interrupt him because we'll have to keep switching out and in. But brilliant concept. You always tend to do that. Otherwise, also. So you all, yeah, okay. So you got 1 point now. Pakistan Junior League, as the product as it stands, it's a brand new concept, something to look forward to, a platform for the youngsters, and also a product that will be ready for the future. So when these youngsters go out and play with the senior boys, they don't feel in awe of them. Lots of positives in that. Just a little quick one. If you put it in a nutshell, how do you see this product? So Sikandar, the idea, and Roha, hi, how are you? Hi. Thank you for doing this. The idea is to provide these young kids with a champion environment, because I've always believed that environment produces greatness. And so if you've got great icons sharing the dugout environment and talking about the game, it's a priceless situation for these kids. The other thing is to empower these kids also financially. The way things are happening in Pakistan, the future of sports generally is not that great from financial terms. But if I want to draw a 10-year-old kid towards the game, he needs to know whether he has a future in the game at that young age. And it matters to us because you can then transform that 10-year-old kid into, into settling in with good habits. And so if there is this process, a pathway process where there is cricket, where there's money, where there's great environment, then we've got a winner. Right. Ramesh, you have... We'll just head out. Oh, I think Zainab's ready. And let's join Zainab, and she's got another pick. जी गवादर शार्क्स एलीट कैटेगरी, प्लीज बताइए इनकी क्या पिक है। जोसेफ एक्लैंड विकेट कीपर बैटर इंग्लैंड से, और अगेन अनदर टैलेंट टू वॉच आउट फॉर। इनको हम देख भी चुके हैं एंड अगेन विल सी हिम इन एक्शन इन दिस लीग। शायद पहली दफा उनको शायद मौका मिल रहा है कि वो इस किस्म के एक टूर्नामेंट में खेले। सो कंग्रेचुलेशंस टू देम। This is obviously the wrap-up of the first round. We are staying with Gawada Sharks for the second round, and उनका time जो है वो शुरू होता है अब। Okay, Roha, so you were saying something. Yes, of course, we're in conversation with the chairman, Ramesh Raja. Ramesh, आपने अभी It पांच feels very odd when you address me as chairman. That is your title. It sounds a little different, but anyway. Anyway, so you were talking about Pathway program. PCB obviously has other initiatives in place for these age group players. So how is PJL going to harmonize with the efforts of the Pathway program? So we've got the 100 Best Kids program running right now, and I'd like to thank all the stakeholders, the sponsors. It's a good time to do that. So thank you, Angro. Thank you, Beacon House School System. We're going to provide free education to these 100 kids. Thank you, BS, for providing free gear to these 100 kids. BRB construction companies to provide 30,000 rupees stipend That's terrific. per month to these 100 kids. So we are financially empowering them and also making sure that we get wholesome product done up, whilst these kids are there. So this Pathway program will then translate into PJL. All the talent from there will then go on to play PJL, which is more professional.
and then to first-class cricket, then to PSL, Of course. and eventually to Pakistan. So there's this process that we have devised, and inshallah, it will work. It has to work for future of Pakistan. Well, The Pakistan cricket has taken the first step to introduce something like this. What was the response from the other boards around the world on the concept of getting youngsters? You see, Sikandar, we've got interest from 150 international kids. All cricket boards are on board with us. South Africa couldn't have a list prepared because the kids are having their exams during that period of October. But England, Australia, you name it, we got great response from Sri Lanka, from West Indies, and you'll see in the spread when teams pick these international cricketers and international future stars. When you talk about PJL, I mean, it's your brainchild, you've thought of it. Where do you see this in the next 5 years? You must be having a vision on that as well. So what happens, what has happened in Pakistan cricket is that we go through these massive dips, Sikandar, where suddenly we lose form and we lose players because either they're aging or they're not fit, and then we don't have a backup supply chain. So the idea is to have that backup supply chain and produce Babar Azams and Shahid Afridis of the world through this program. So once we do that, then there'll be a bigger pool of players available, and we'll not go through those such dips anymore. So it's about supply chain, it's about making them professional at a young age. It's not only about cricket, it's about diet, it's about physical conditioning and strengthening. Okay, we'll come back to you. Let's head out to Zainab once again, and she's got a pick with her. Thank you, Sikandar. Kavada Sharks elite category round 2. Please अनवील कीजिएगा क्या प्लेयर हैं, कौन से प्लेयर हैं जिनको ने दानियल इब्राहिम बैटिंग ऑलराउंडर. अभी जो श्रीलंका का टूर है इंग्लैंड का उसमें ये मौजूद है अंडर 19 एंड obviously we need a lot of all-rounders as you know in this format. हमेशा ज़रूरत पड़ती है. So great pick. और अब हम चलते हैं अगली पिक की तरफ which goes to बहावलपुर रॉयल्स और आपका टाइम शुरू होता है अब. Yeah, welcome back once again. So we're talking to Pakistan Cricket Board Chairman Ramesh Raja, and Roha is... Yeah, I just have a quick question because you mentioned Shahid Afridi, so it came to my mind कि mentors का बहुत important role होने वाला है, and very nicely you guys have cherry picked these mentors. क्या thought process था mind में behind picking the likes of Coleman Munro and Vivian Richards? So currently retired or currently playing professionals and stars, and also with a tadka of a Miyadar and a Sir Vivian Richards, because इनके होने से आपको तसल्ली भी मिलती है. इन्होंने सब कुछ देखा हुआ है. माना कि T20 नहीं खेली मगर आपको इतराज़ नहीं हो सकता है इनकी क्लास से. बिल्कुल. और जावेद मियादार जो है वो तो एक किताब है क्रिकेट की. मैं उनके साथ खेला, मुझे पता है कि उनके आइडियाज़ जो हैं वो अभी भी खासे फ्रेश हैं रिगार्डिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. एंड विव रिचर्ड्स को बोर्ड पे लेके आना एक बहुत बड़ी बात थी. Definitely. इसलिए कि बहुत बड़ा नाम है हमारी लीग को, वो 4 चांद लगाएंगे. ये पता नहीं आप लोगों ने बताया या नहीं बताया, बट ये जो एलीट जो ग्रुप में अभी सिलेक्ट हो रहे हैं प्लेयर्स, इनकी वैल्यू कोई $20-22,000 है. वाओ. सो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो मेरे ख्याल में $15,000-18,000 है. सो ये बताना ज़रूरी है कि 15 दिन की क्रिकेट में अब पैसा भी है और इज्जत भी है. बिल्कुल बिल्कुल. और आपने जो शुरू में बात की कि बिकॉज PCB हैज़ टेकन ओनरशिप ऑफ ऑल दी ऑपरेशंस, तो ये भी है कि यू कैन इंश्योर दैट दे डोंट गो ऑफ ट्रैक एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट सीजन. बिल्कुल. देखो ना रोहा, आई मीन पैसा है, फिर ये संभाल के चलना है हमें. ये इम्प्रेशनेबल उम्रें हैं और इनको ऐसी इन्वायरमेंट देनी है जहाँ पे इनकी इस्लाह भी होती रहे, इनको आइडिया भी हो कि क्या करना है इस पैसे के साथ. We'll come back to that. Hold that thought, Rami. Zainab is ready with the next name. Right, बहावलपुर रॉयल्स की एलीट कैटेगरी राउंड 2. क्या है जी पिक, जरा रिवील कीजिएगा नाम. नेथन एडवर्ड्स, द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम द कैरिबियन, लेफ्ट आर्म सीमर है. एंड आपको पता ही है आजकल लेफ्ट आर्म सीमर्स की वर्ल्ड क्रिकेट में क्या इंपॉर्टेंस है. सो ग्रेट टू हैव अ प्लेयर फ्रॉम द कैरिबियन. एंड इफ वी कैन नाउ मूव ऑन to the next pick, which is going to be
Rawalpindi Raiders. Yes, Okay. we're back in the studio in conversation with Rameez. You were telling us about the financial aspect. So there's plenty of money to be made by these players, and I'm absolutely happy for it because हम उस ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे हमने देखा है कि स्पोर्ट्स सफ़र करती हैं अगर उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है और उसमें पैसा नहीं है. Okay, I think the name's already in. A very quick pick that was, we'll go back to Zainab. बाल बना रही हैं. अच्छा जी, Rawalpindi Raiders, elite category. If we can please have the name. किसको उन्होंने select किया है? Ali Ishaq, top scorer of the one-day tournament, left-handed batsman, Rawalpindi Raiders. And हमें पता ही है left-handed batsman को वैसे भी visually भी देखने का मजा आता है. So great pick, top scorer हैं one-day tournament के अभी. और अब वक्त आ गया है अगली पिक का, which is Hyderabad Hunters. Right, we're here with Chairman PCB Rameez Raja. Commercial rights के ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं. You know, एक strategic decision था PCB का, you know, to hold the first season, you know, with ownership of these teams. लेकिन आगे का future आप कैसे देख रहे हैं, especially the next 3 seasons? देखिए ये हमारे लिए भी रोहा एक प्रोटोटाइप है. Yeah. So इसके मॉडल को समझने की भी ज़रूरत है. इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे. इंटरेस्टेड पार्टीज बेइंतहा थी. 7 फ्रेंचाइज ओनर्स आए 6 टीम्स लेने के लिए, बट वी फेल्ट के आई थिंक अभी हमें जो भी टर्म्स हमने डिसाइड करनी है वो थोड़ा सा अपना होमवर्क और हमें करना पड़ेगा. अभी मैं इंग्लैंड में था, डिज्नी और ESPN के ऑफिसेज में था, तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस हैज़ टू बी रीनेम्ड मे बी एज वर्ल्ड सुपर जूनियर लीग. We'll come back to that. The name's ready now. Let's go back to Zainab Abbas. जी, हैदराबाद हंटर्स राउंड 2 elite कैटेगरी. क्या आपने पिक किया है, किसको पिक किया है, किस प्लेयर को? कैन वी प्लीज हैव द नेम? अफाक खान, लेफ्ट हैंडेड, आपने बैट्समैन है. और अगेन इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि है, जैसे कि मैंने कहा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आजकल वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ज़रूरी हैं. They obviously bring a different dimension to the game. So congratulations, and if we can please move on to the next category, which belongs to Mardan Warriors. Okay, so, yeah. मेरे सवाल खत्म हो गया आपने. So मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वहाँ पे जाके जब आप दुनिया से बिजनेस की बात करते हैं सिकंदर, तो वहाँ रियलाइज़ करते हैं कि यू नो, क्योंकि ये सारे इंक्लूसिव हैं, एक इंडियन ब्रिट भी इस लीग का हिस्सा बनना चाहता है. तो मैंने अभी सोचा है कि शायद इसको, अभी तो पाकिस्तान जूनियर लीग है, आगे चल के ये वर्ल्ड जूनियर लीग, क्यों नहीं हम दुनिया को वेलकम करें. Love that concept. Yeah. And talk about the interest from the 22 boards. क्या था? बेइंतहा था रोहा. सब ने हमें ये जो 150 प्लेयर आया है, सब उन्हीं की वजह से. एसोसिएट मेंबर्स बहुत खुश हैं. Yes. बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चों को एक मौका आप दे रहे हैं. ये आपको अंडर 19 वर्ल्ड कप में ये चीज़ नहीं मिलती है. बिल्कुल. तो ये हम एक हिस्ट्री क्रिएट करें और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग इसमें हिस्सा डालें, क्योंकि ये बिल्कुल. पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है. बिल्कुल, ये वर्ल्ड जूनियर लीग का कॉन्सेप्ट भी एक बहुत एक्साइटिंग एक हिंट जो आपने हमें दिया है. बट ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. सिकंदर, यू हैव समथिंग टू ऐड? I was saying after $20,000 plus मेरे सवाल ही खत्म हो गए. आपको भी मिलेंगे सिकंदर. आप बेइंतहा अच्छा काम कर रहे हो. आपको इतने नहीं, बट कुछ ना कुछ जरूर. मैं But तो tell me something, sorry, but convincing the parents, because they are young age. Of course, money factor is a big positive and a big pull. And then, of course, how to handle the players when they're earning that kind of money to keep their concentration. So you're always looking at the positives and the negatives that could be. Absolutely. इसी ये डेलिकेट मैटर है. So हम इसको खुद रन करना चाह रहे थे. पेरेंट को भी हम इनवाइट कर रहे हैं, एक ओवरसीज को, कि वो आके बच्चों के साथ रह सकते हैं. Okay. Right, I think we have the next name ready.
and we will be going back to Zainab on stage. Okay, I think we have more time. थोड़ा सा भी confusion चल रहा है because ज़ाहिर है इतना delicate process है pick करने का कि कौन से players जो हैं, because you know limited number of players. ये रोहा आपको सुपरस्टार्स दिखेंगे, एक एडिशन के बाद एक एक नाम जो है ना ये घर में आप उसको याद रखेंगे. I look forward to that. We're ready to go back to Zainab now. Let's see who the next pick is. अच्छा जी, मर्दान Warriors Elite Category Round 2. Please, if we can have the name. अब्बास अली, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. राइट हैंडेड हैं अब्बास अली, मर्दान Warriors के लिए खेलेंगे, सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो. चले जी, अब हम चलते हैं अगली टीम की तरफ, गुजरावाला जायंट्स. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Yeah, you see Shoaib Malik and men are busy in selecting. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. I'm sure ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया होगा, and that is, it's a T20 format. And usually people say, lots of former cricketers say that why are you pushing people in the shortest format rather than, you know, groom them in the longest format? Sikandar, it's a reality. You get ICC rankings for T20. You see the kind of interest the kids have. It's a generation next game. It's entertaining and it works. And it involves more skill level than your normal 50 overs in Test cricket. Test cricket, you can have these silent periods. Here it's action-packed. You can freely be yourself. Even if you get out, there is no danger of being reprimanded in a way because you've got a license to maybe go and take those risks. So इसमें बहुत ज़्यादा, और ये मैं समझता हूँ कि इसी में मार्केटिंग है और इसी वजह से पैसा आता है इस गेम में, T20 की वजह से. तो इसमें बहुत सारे इसके जो आप बॉक्सेस टिक करते हैं. We watched the match last night. I mean, it's so important that your senior most team performs, and that gives a boost to the youngsters because this is who they look up to. Sure. Definitely. ये इस वक्त पाकिस्तान टीम माशाल्लाह से जो है वो अपनी धाक बैठा रही है और इनको मैंने कहा यही है कि आपने हर मैच ऐसे सोचना है कि जैसे लास्ट मैच है और लड़ना है, और इसीलिए जो है हम ज़्यादा चेंजेस भी नहीं करते हैं बिकॉज एक दफ़ा जब मॉडल सेट हो गया रोहन सिकंदर तो उसको डैमेज करने की ज़रूरत नहीं है. बड़ी देर के बाद फैंस ने ओनरशिप ली है इस टीम की और वो इसलिए ली है कि अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं क्योंकि ये जीतते हैं और लड़ के हारते हैं. सो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, उसका रिपल इफेक्ट है. आप देखेंगे कि हमारी क्रिकेट इकोनॉमी ग्रो होगी, पाकिस्तान टीम जितनी दफ़ा इंडिया को हराएगी, ये बच्चों का इंटरेस्ट पैदा होगा. पेरेंट्स चाहते हैं अब उनके बच्चे क्रिकेट खेलें. सो एक हम नया मॉडल क्रिएट कर रहे हैं और इसका हमें शुक्रिया अदा करना है बाबर आजम एंड कंपनी का क्योंकि वहाँ से ये सारी ट्रेल जो है वो शुरू होता है. Cricketers obviously देखते हैं अपने seniors को and they want to perform just like them. You must be also having a picture of visuals how this event is going to look like, Pakistan Junior League, for the viewer who is not playing. So हम सारे स्कूल के बच्चों को बुलाएंगे, हम स्टेडियम्स भरेंगे इंशाल्लाह, हम इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे, हम बहुत ज़बरदस्त जो कि इंटरनेशनल लेवल की कवरेज होती है वो करेंगे. विल मेक श्योर कि 15 दिन एंटरटेनमेंट के हो. मैं सोच रहा हूँ कि अंडर 19 बच्चे को कमेंट्री पे लगाएंगे. सो आपको वो शायद टफ टाइम देगा मगर ये कि कोशिश यही है कि एक हम एक नया मॉडल क्रिएट करें और इसमें बच्चों का इंटरेस्ट, फैमिलीज का, पेरेंट्स का इंटरेस्ट पैदा करें. अच्छा रमीज, आई वांट टू टॉक अ बिट अबाउट द टीम्स एंड द सिटीज दैट दीज टीम्स आर रिप्रेजेंटिंग क्योंकि ये छोटे शहर, ये वो वाले शहर हैं जो अक्सर लाइमलाइट में नहीं रहते हैं. सो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड सेलेक्टिंग दिस? ये गेम को स्प्रेड होना है और इस गेम को स्प्रेड करने के लिए उस सिटीज़ की ओनरशिप हमें चाहिए. सो आइडियल वर्ल्ड में तो हमें होम एंड अवे कॉन्सेप्ट पे चलना चाहिए बट बिकॉज सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं और हम लिमिटेड हो जाते हैं तो इसीलिए इसको लाहौर हेडक्वार्टर्स में पहला फीचर हम कर रहे हैं इस लीग का. बट हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो पाकिस्तान में. मैं तो चाहता हूँ कि PSL जो है वो फैसलाबाद में खेली जाए. लाहौर कलंदर्स अपना एक मैच फैसलाबाद में खेलें, एक सियालकोट में खेलें, इसी तरह कराची किंग्स जो है वो हैदराबाद में खेलें. वेल लेट्स सी ये प्लान जो है ये कितनी जल्दी हम देख पाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस रमीज. वी आर गोइंग बैक टू ज़ैनब नाउ. थैंक यू सो मच रोहा. गुजरावाला जायंट्स की कैटेगरी एलीट राउंड 2 का नाम प्लीज रिवील कीजिए. क्या पिक की है आपने? अजान अवैस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो अभी अंडर 19 का टूर्नामेंट हुआ है, नेशनल टूर्नामेंट, उसमें ही वाज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स. सो मेनी कंग्रेचुलेशंस.
ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं मर्दान वॉरियर्स की तरफ। मर्दान वॉरियर्स ने काफ़ी अच्छी पिक्स की अभी तक और आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस चीज़ पे रिमाइंड करती जाऊँ कि ये कैटेगरीज जो हैं, 3 कैटेगरीज हैं। फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव जस्ट ट्यून्ड इन to this particular league, PJL. There are 3 categories. There is Elite, Premier and X Factor. जो Elite category है, it includes high-profile players who have either already appeared for their national under-19 team or they've made an impact in the domestic, on a domestic level, age group cricket organized by an ICC member cricket board. Premier obviously includes players who have significant age group cricket experience or they've been part of pathway cricket for their boards or regions. और जो X factor है, that includes associate member boards के players as well as promising local talent. So we have 3 categories, Elite, Premier and X factor. अभी Elite चल रही है, उसके बाद Premier आएगी and X Factor आएगी. So if we can please have the name, हमारे पास नाम आ गया है. आर्ची लेनम ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हैं. He is a leg spin all-rounder and he's youngest ever player and like we've always said, Eastbourne के लिए youngest ever player हैं and leg spinners की तो आपको पता ही है, जिस तरह के हमने कहा कि लेग स्पिनर्स हम देख रहे हैं. कल आपने देखा ही होगा शादाब ने क्या किया, जनरली कितनी ज़रूरत होती है इन द शॉर्टर फॉर्मेट. चलिए जी, नाउ इट्स टाइम टू मूव टू हैदराबाद हंटर्स. हैदराबाद हंटर्स, आपका टाइम शुरू होता है अब. Right, we're joined in the studio by the CEO of Pakistan Cricket Board, Faisal Hasnain, who just gave a really exciting and encouraging speech. Faisal, ये एक first of its kind league है, इसके बारे में बात काफ़ी हुई है, लेकिन definitely challenges भी थोड़े आए होंगे in making it materialize. So talk a bit about that. देखिए, challenges, the main challenge was trying to convince people that this concept is actually going to work. And the reason why we are doing it, T20 has been there for a very long time. The leagues have been there for, for the last 14, 15 years. But no one has actually developed this concept of, I'm sure people thought about it, but for some reason it didn't happen. हमने जो देखा इसको, once the idea came to the chairman कि देखें ऐसा एक event होना चाहिए. I think that, and the more we studied it, we said that this is something that Pakistan needs in order to nurture its talent, give them a platform, become part of our pathway program. So the challenge really was trying to convince firstly ourselves and then trying to convince our stakeholders that this is a concept that will work, and we are firmly convinced that it will. I'm sure about that. We're all sure about that. But right now, Zainab is ready with the next pick, so let's go back to her. जी, पिक रिवील का टाइम आ गया है. हैदराबाद हंटर्स, आपने किसको पिक किया है? इफ यू कुड प्लीज हैव द नेम. आफ्ताब इब्राहिम. आफ्ताब इब्राहिम का सिंध से ताल्लुक है, कराची बॉर्न है एंड सिंध अंडर 19 में हमने इनको देखा है और अब ये खेलेंगे PJL. सो बहुत बहुत मुबारक हो आपको आफ्ताब. और अब टाइम आ गया है गवादर शार्क्स का. एक बार फिर से योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Right, we're in conversation with CEO of Pakistan Cricket Board, who was telling us about some of the challenges. Now, Ramesh talked a bit about the commercial aspect, but I want you to tell us about the players themselves. You must have interacted with them. क्या hope लग रही है? You know, how excited are they? I think I wish I was 19 or 18 or 17. Don't we all? Don't we all? But when I see these young kids and the way that they've been practicing at our academy,
at our National High Performance Center, that the way that they're eagerly listening to what the coaches are saying, and you know, the way that they've been, you know, they've approached this whole setup has been incredible. I mean, it's really youthful exuberance and positivity that has come to the fore. And to be honest, मैं जब उनको train करते देखता हूँ, and when I look at some of their coaching sessions, I really feel that, you know, I wish I was, you know, 16 again and part of that squad. It's delightful. That's lovely to hear. You know, talk a bit about the relationship between the board and these players, because I इतनी delicate इनकी age है. How are you planning on nurturing that relationship? देखें, जो हमारा काम होता है ना, it is not necessarily winning is not the ultimate aim. The ultimate aim is to bring out and play to your true potential. That is it. As long as you play to your true potential, I think you've achieved something. Okay? And whether that is finishing second or third or winning the event. Definitely, definitely. And one thing that the board is going to try and instill in these players, apart from the playing aspect, is some of the life skills. I think that is so important. Yeah. And we have these, what are essentially young boys, young kids. Yeah. And life skills is going to be part of their training. Well, words of wisdom there by Faisal Hasnan. We're ready for the next. We're ready with the next name. So going back to Zainab on stage now. Right, Gawada Sharks. Kisko pick kiya hai, please? If you could please have the name. Haseeb Nazim ji, right-handed batsman hai. He plays for Southern Punjab under 19. And he's only 16 years old. He's probably one of the youngest boys that we have in the PJL. So, बहुत आपको मुबारक हो, and a great opportunity indeed. Right, time to move on to the next one, which is basically Gujranwala. If you can please start making your decisions, because your time starts now. While they're selecting, let's talk more about PJL, and I want to talk to you about your personal experience, because it's been a roller coaster ride since you joined in. Chairman was also fairly new. Now you guys seem to have a tag team and you are on the same page. But when PJL came in, from your eyes, from your point of view, how do you see it? Because you worked in Africa, you worked for the ICC. How does it impact on world cricket for the youngsters? It's a wonderful opportunity. And what I think is that, inshallah, after this first event, we will see other countries, I am sure, picking up their eyes and ears and seeing that, hey, listen, this is something that we should also be exploring, because it's a perfect platform to fill that gap between your club cricket and your first-class cricket. Beech mein kya hota hai? You know what happens is that between club cricket and first-class cricket, there's this gap. And at that age of 18, 19, when a person is a young cricketer, talented, is deciding, should I go into cricket as a career? Can I actually make it? Or should I, you know, go into medicine or accounting? And sometimes what comes from the parents is, dekhen beta, cricket is fine, but really you should look at another profession. We'll just come back to you, sorry to interrupt you. We'll just head out to Zainab, and we got another pick ready. You could please have the name for Gujranwala Giants. Uzair Mumtaz ji, right-handed batsman hai, one of the top performers in one-day cricket that we've seen. Southern Punjab under 19 se unka taluk hai. And if we could also have Shoaib Malik बैठे हुए हैं, Ijaz Ahmed साहब, अगर आप आके reveal करेंगे कि आपके, because we have the captain's name, कि who they want their team captain, if we could please have you on stage to announce who's going to be your team captain. Please, आपकी भरपूर तालियों में Shoaib Malik and Ijaz Ahmed. Ji, Shoaib. What a moment for this young man.
captain in the PJL. Shweb, अगर आप आके कुछ इनके बारे में कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। पहले ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन एक छोटी सी एडवाइस ज़रूर करूँगा उस ज़ाहिर को कि लीडर जो होता है उसका काम होता है कि सबको इकट्ठा रखना, और उससे भी पहले जो आपके टीम मेंबर्स हैं, जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, उनकी आदत को जानना कि किसको थोड़े से हार्श वर्ड्स में मैसेज देना और किसके साथ आपने प्यार से रहना। ये छोटी सी एडवाइस है। बाकी लीडर को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और जब आपकी बैटिंग आए या आपकी बॉलिंग आए तो आपका पूरा फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए। यही मैं थोड़ा सा बोलना चाहता था। थैंक यू। और बाकी जो अंडर 19 के बच्चे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जो ये 15-20 दिन हैं उसमें सिर्फ कोशिश ये करना कि फोकस आपका इस पर्टिकुलर चीज़ पे रहे जो आप आके खेलोगे इंशाल्लाह। और मैं रमीज़ भाई को ज़रूर यहाँ पे प्रेस करूँगा। ही हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव, और ये कहीं दुनिया में नहीं हुआ। क्योंकि मैं अभी भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि जो हमारे यंग बच्चे हैं उनको एक्सपोजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एंड आई थिंक इट्स द राइट प्लेटफॉर्म विच हैज़ बीन गिवन टू यू ऑल, एंड आई होप कि इसको आप गेन करोगे और ये आपको बहुत फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। एंड आई होप कि ये लंबी चले, बहुत लंबी चले, और हमारे बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान टीम को मिले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच श्वेब। वर्ड्स ऑफ विजडम जिसे कहते हैं, लीडरशिप के ऊपर भी इन्होंने जो है ऑब्वियसली अपनी एडवाइस दी है, एंड आई एम श्योर यू लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल द एक्सपीरियंस दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। अच्छा जी, अब टाइम आ गया है नेक्स्ट पिक का। रावलपिंडी, आपका टाइम शुरू होता है अब। Shoaib Malik, we'll just continue with Faisal. We're talking about how you've actually created a chain. You talk about the pathway cricket, and Ravi's just mentioned about a 10-year-old child doesn't know which way to go if he wants to play cricket. This will help him. He graduates to PJL and then probably into Pakistan Super League, and then you have this category where you have the youngsters coming in Pakistan Super League. Does that actually catapult a player from this PJL into that automatically? Let's hope so. That's the intent. Again, at the end of the day, these players need to be showcased. People should be aware of their skills. They should be aware that we've got a quality young player here. It's worth investing money in that. Even if he comes into the PSL as a rookie, placed on the bench, you know, the fact is that this PJL is bringing people into the notice of the world. And I actually foresee that some of these players from the PJL will be picked up not only in the PSL but in other world leagues as well, and we are going to actually push for that. Okay. We're ready with another name, another pick, and who is the lucky one? Let's find out. रावलपिंडी रेडर्स किसको सिलेक्ट किया है बता दें हमें। अफनान खान स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और एबटाबाद से इनका ताल्लुक है, राइट हैंडेड बैट्समैन। एंड ऑल्सो आई थिंक आई एम हियरिंग दैट रावलपिंडी ने अपना कैप्टन जो है, they have managed to pick who their captain is going to be. So if I could please call upon Julian, please come forward and reveal to us who your captain is going to be.
Habibullah, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. Habibullah captain है. He made a century in the final of the under-19 tournament. Habibullah, बहुत बहुत आपको मुबारक हो. And I'm sure that you'll learn a lot with all the experience that you have around you. अच्छा जी, अब time आ गया है next pick का, and that goes to Bahawalpur Royals. Continue. All right, here we are. So I'm going to quickly throw the last question to Mr. Faisal here. You're a man of numbers. I mean, you've been around the world and you know exactly how any particular product will work. You could have easily made franchises out of this, but you've taken the responsibility of owning the 6 teams as of now in the first edition. But how do you see this in the next 5 years as a PGL, as a growth? Financially, it's going to be a financial success. Once the reason why, and I'm sure my chairman's spoken about this, the reason why we decided to take destiny into our own hands is because we were trying to sell a concept, a prototype. We need a product, right? And we are creating that product today, which we will take to market. And ek dafa duniya jab dekhegi what we are actually selling. And this is why we wanted to do it ourselves. We wanted to maintain the highest standards possible, run it at its peak, and then showcase it to the world that this is what we have. Do you want a part of it? And believe me, the answer is going to be yes. It's like a push product at the moment, and it's going to be a pull product very, very, very soon. I'm sure lots of other boards must have thought about it, but it's all about taking that first step. And who wants to dive in first? And then others can pick it up from there. Okay, so we'd like to thank you for joining us. I'm sure you've got lots of other things to look after. Wish you best of luck with the PJL. Of course, we all will be part of it starting on October 6th, and we'll go up to the 21st of October. And this is the less we say or the more we say, it just doesn't sound enough, because it's a huge platform for the youngsters and they are in focus, and we wish them best of luck as well. Let's head out to Zainab and see who's been picked. जी, Bahawalpur Royals ने पिक किया है, नाम प्लीज सामने लाइएगा, उबैद शाहिद. सेंट्रल पंजाब से इनका ताल्लुक है, अंडर 19 में. He's only 15 years old. You know, and this is what PJL is all about, you know, giving a platform to young boys and investing in their future. So many congratulations to Ubaid. And if we can now move on to the next pick, which will be Bahawalpur Royals. Your time starts now. जी, जो लोग हमें follow कर रहे हैं, once again, it's just a quick reminder of the 3 categories that we have here. We've got Elite, Premier and X Factor. Elite includes high-profile players who have either already appeared for their national under-19 teams or they've made an impact on a domestic level. Age group cricket, which is organized by an ICC full member cricket board. Premier जो है, that includes players who have significant age group cricket experience or they've been part of pathway cricket for their boards or regions. And X Factor जो है, that includes associate member board players as well as promising local talent. So this was just a quick reminder of the categories for those of you who've just tuned in to the PJL draft. और बहुत अच्छा मौका है इन लोगों के पास. And there's also, let's not forget that a lot of money is involved for all these categories. $18,000 to $20,000 in Elite. Premier is $12,000 to $14,000, and X Factor is $6,000 to $8,000. So again, we talk about how you benefit from these leagues as well. So there is money involved in this, and you will get an opportunity to showcase your talent on this level. Right, we are ready with the name. So Bahawalpur Royals. Sajad Ali, बहुत बहुत आपको मुबारक हो. Left-handed batsman and left arm medium fast. So lefties की आजकल जो है चल रही है बहुत, हम देख रहे हैं left armers world stage पे भी कैसा perform कर रहे हैं. But now we are ready with the next pick, which is going to be Rawalpindi Raiders, and your time starts now. We're joined in the studio by the legend,
Javed Miandad, who is involved with the Pakistan Junior League as the league mentor. बहुत सारी बातें इनसे करनी है. अभी हम कल के मैच के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. You know, his great 6 in Sharjah, but he has contributed so much more to the game. आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान जूनियर लीग का कॉन्सेप्ट और ये लड़कों से मिलके कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ही इज़ वेरी शार्प और माशाल्लाह, राइट, क्योंकि खेले भी. और इनका तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि व्हेन वी ऑन टूर, तो ये वो सो कीन कि टूर हम न्यूजीलैंड कर रहे थे, और आप बिलीव करें कि मुझे मेरे पास आके और मेरी A to Z इस प्लेयर ने मेरा सारी चीज़ें ली कि जावेद भाई अब जब इस वक्त होते थे तो क्या करते थे, जब यूँ खेलते थे तो ये होता था, ये होता था, मैं सारा लिखा. तो वो शो करता कि वो सो कीन. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बच्चे सुन भी रहे हैं कि देखें, आप प्लेयरों के पास जाओ, आपको प्रॉब्लम है, एक वर्बली भी बताते हैं और एक प्रैक्टिकली भी होती है. अगर आपको कोई बताता है उसको फिर आप कॉपी करें प्रैक्टिस में, और प्रैक्टिस में जब आप शॉट करें तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है. बिल्कुल. और डे बाय डे क्रिकेट जो है कभी फिनिश नहीं है. आज आप 100 करते हैं, कल 0 करें, आप एकदम आ जाते हैं. तो क्रिकेट में अपना जो माइंड है, अगर बैट्समैन है तो उसको ये सोचना है कि मैंने ऑक्यूपाइड रखनी है क्रीज को. जितनी आप क्रीज ऑक्यूपाइड रखेंगे, खड़े रहेंगे, रन्स जब होते हैं. बिल्कुल. और हालात को देखते हुए, बिल्कुल, इस वक्त वो क्रिकेट से ऐसा तो क्रिकेट क्या बोल क्या रही है, क्रिकेट भी लैंग्वेज है, बात करती है. ऐसा ही है. बिल्कुल. यहाँ देंगे तो यहाँ मारूंगा, और आप सीखते रहेंगे ये लैंग्वेज. तो मैं ये थोड़ा आपके तरीके जो सुन रहे हैं ना बच्चों को मैं बताऊंगा, देखिए क्रिकेट को किस तरीके से तुम लेके चलोगे. ऐसा ही है. ईजी भी है और मुश्किल भी है. जिसको नहीं आती उसके लिए मुश्किल है, वरना क्रिकेट बहुत आसान है. ऐसा ही है. 4 चीजें 5 चीजें के अलावा कुछ नहीं. जी जी. बॉल, ड्राइव, कट, ये ऑफसाइड, 5 छठी चीज नहीं है. कोई भी क्या करेगा, यॉर्कर करेगा, फास्ट बॉलर यॉर्कर करेगा, इन स्विंग, आउट स्विंग, बाउंसर, स्पिनर जो होगा वो ऑफ ब्रेक करेगा, एक बाहर निकालेगा, लेग स्पिनर जो लेग ब्रेक करेगा, टर्न यू और गुगली करेगा. तो मैं ये इसलिए बताऊं जो सुन रहा है ना तो उसको क्रिकेट इतनी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वी विल कम बैक टू दैट क्योंकि अगला नाम जो है वो रेडी है स्टेज पे, और लॉट्स मोर टू हियर फ्रॉम जावेद मियांदाद, बट लेट्स गो बैक टू ज़ैनब फॉर द व्हाइल. ऑलराइट, रावलपिंडी रेडर्स, इफ वी कैन हैव द नेम प्लीज. राउंड 4 में इन्होंने पिक किया है हसन ईसा खेल. ही इज अ राइट हैंडेड बैट्समैन, ही इज एन ओपनर एंड ही इज फ्रॉम अफगानिस्तान. अच्छा जी, before we move on to the next pick, we will be announcing the remaining captains shortly. कुछ announce हुए हैं, कुछ नहीं हुए teams के. So before we move on to the next round, we're just going to get into all the captains. So we'll be back just in a bit. Here we are. So, Roha, मुझे नहीं मालूम, आप you must be very young, but I was there when he hit that 6. और वो सिर्फ एक छक्का नहीं था, वो एक एरा का ऐलान था. पाकिस्तान की जो डोमिनेंस थी वो एक तरह से छाप बैठ गई थी. और कल रात को जो हमने देखा नसीम शाह ने किया, सिर्फ मैं नहीं, काफ़ी लोगों ने उस याद को ताज़ा किया. वेन्यू सेम था, माहौल सेम था. आई डोंट थिंक जावेद मियांदाद साहब को मेंटोर्स का मेंटोर बनाया गया है ऑल ओवर, एंड बहुत से लोग इनसे सीख सकते हैं और बहुत से लोग इनसे बहुत सी चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं. मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो एज है इनकी, इन बच्चों की, एक कोरे कागज़ की तरह, इसमें जो लिखेंगे वो छप जाएगा. तो ये बहुत डेलिकेट मैटर भी है, और किस तरह से इनको आगे ग्रूम करना है, यहाँ से इनका फ्यूचर स्टार्ट होता है कि इनको क्या प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत बड़ी चीज़ है. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म. क्योंकि हमारे टाइम में मैं नहीं समझता कि एनी वेयर इन द वर्ल्ड आपने देखा कि कोई इस तरह की लीग हुई, राइट. तो आप एज लॉन्ग मैं रवीश को मैं जिस तरह जानता हूँ कि इसकी अपनी जो है ना बड़ी आगे, ही इज़ ऑलवेज अहेड, कि यूँ नहीं अब यूँ, क्योंकि इन्होंने बड़ा अपने आप को पॉलिश. मुझे याद है कि जब भी वो टूरिंग में तो मुझे अपने मेरे कमरे में आके ही इन्होंने एक एक चीज़ मुझसे पूछी. तो ही वॉज सो कीन दैट टाइम कि जब भाई ऐसा टाइम होता तो क्या करते हैं, ऐसा टाइम देना, फिर अपने आप को पॉलिश किया. तो मैं यही कहूँगा कि इस वक्त हमें एक अच्छा फाइटर
और यंग डायनामिक एक चेयरमैन मिला जो क्रिकेट, तो क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि ये वही प्लेयर था जो 2-2 घंटे प्रैक्टिस करते। अच्छा, मैं एक मिनट आपके पास वापस आता हूँ, पिक रेडी है और उसके बाद हम और बातें करेंगे PGL को लेके जावेद मेदा साहब से। अच्छा जी, अब अनाउंसमेंट होने वाली है कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स की। सो इफ वी कैन प्लीज कॉल अपॉन द रेलेवेंट पीपल। अरहम नवाज, मर्दान के कैप्टन हैं अरहम नवाज, वाइस कैप्टन हैं बहावलपुर के जी, बहुत बहुत मुबारक हो। There he is coming to get his इनका क्या नाम? अरहम नवाब जो हैं वो वाइस कैप्टन हैं जिनसे आपने अभी मुलाकात की। कैप्टन यहाँ पे मौजूद नहीं है, अभी मुझे इमरान फरत ने बताया है, तो बहुत बहुत मुबारक हो अरहम आपको भी। वाइस कैप्टनसी भी जो है ऑब्वियसली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल देयर। अच्छा जी, अब टाइम आता है गुजरावाला जायंट्स का। Your time for the next pick starts now. हमारे साथ जावेद मेदा साहब मौजूद हैं और इनकी क्रिकेट के बारे में कौन नहीं जानता। स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, अहेड ऑफ द गेम। जितनी बारी खेल रहे होते हैं ऐसा महसूस होता है कि अगर 10 ओवर हुए हैं ये 15वें ओवर में खेल रहे हैं, क्योंकि आगे ऑपोजिशन क्या सोच रही है, बॉलर के साथ क्या करना है, सब कुछ ये सारी चीज़ें कोई ख़रीद नहीं सकता, ये सिखाई जा सकती हैं इन बच्चों को। और आप यहाँ मौजूद हैं और आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। इन लोगों के लिए इससे बेहतर मेंटोर हो नहीं सकता। वो इन पे है कि कितना ग्रैब कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी से। आप इस पाकिस्तान जूनियर लीग को एज अ क्रिकेटर कैसा देख रहे हैं कि ये कितना बेनिफिट करेगा बड़ी टीम के लिए जब इनकी बारी आएगी? बिल्कुल बहुत बेनिफिट देगा, इसलिए कि देखिए कंट्री की जो टीम होती है ना, तो वो 11 लड़के एक ही खेलते हैं, बाकी को कोई तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये बच्चों में आए और फिर इसमें से आपको ना पिक करेंगे। और ये भी है ना आजकल के क्रिकेट में बहुत ज़रूरी हो गया कि इस तरह की क्रिकेट जो आ रही है, तो हमें अपने एज ए पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि हमेशा से है ना बड़ी अच्छी रही है, सारी दुनिया में मानी जाती है, तो वाई नॉट कि हमें भी वो चीज़ें ज़रूर करानी चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि दिस इज़ द एज 16-17 जो है इधर है लर्न सीक एंड प्ले। उसके बाद आपका 20-23, 4, 5 में तो फिर आप टू लेट हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट आपका हो रहा है, हमारा हो रहा है, यानी कि ये जो यंगस्टर के लिए जो अंडर 19 है, जो यूथ है कि इनमें से जो निकलेंगे तो लॉन्ग टर्म जाएंगे। बिल्कुल हो सकता है इंशाल्लाह ये 8-8 साल 10-10 साल जो यहाँ खेलते जाएंगे। तो यही टाइम है, इस टाइम में अगर इनको क्रिकेट की समझ आ जाए, इनको पता चल जाए, हर चीज़ पता चल जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान को पिक करने में। ये ऐसी मुश्किल जो है आई थिंक वेलकम होगी जब इनके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी। हम एक बार फिर चलते हैं ज़ैनब के पास एंड वील फाइंड आउट हु इज़ द लकी बॉय बीइंग पिक्ड। ऑलराइट, गुजरावाला जायंट्स प्लीज रिवील कीजिएगा आपका कौन सा प्लेयर है जिसको आपने पिक किया। टॉम एस्पिनवॉल, ही इज एन ऑलराउंडर, एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग फॉर इंग्लैंड। अंडर 19 टीम में जो हैं उनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो कंग्रेचुलेशंस गुजरावाला एंड कंग्रेचुलेशंस टॉम। अच्छा जी, अब टाइम आ गया है कैप्टन अनाउंसमेंट्स का। So if we could please have Mardan Warriors come forward and announce their captain as well as
हैदराबाद हंटर्स। पहले मैदान वॉरियर्स आ रहे हैं, आ जाएं। अब्बास अली, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। मर्दान ने आपको कैप्टनसी दी है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास टू शोकेस योर लीडरशिप स्किल्स। और अब टाइम आ गया है हैदराबाद हंटर्स का। अब्दुल रज़ाक साहब के हाथ में है जर्सी, एंड इफ दे कुड प्लीज कम फॉरवर्ड एंड अनाउंस द कैप्टन एंड पास ऑन दिस लवली जर्सी। मैं हाँ अच्छा जी, साद बेग आपको बहुत बहुत मुबारक हो। You will be playing for this lovely side, Hyderabad Hunters, and what an opportunity. Saad, well done, and I hope to see you in the Pakistan side one day. All right, so ये थी आपकी कैप्टन्स की अनाउंसमेंट। कुछ आपको शुरू में बता दिए थे, कुछ अभी हैं, और अब टाइम आ गया है वापस राउंड पे जाने का। गवादर, आपका पास आपका टाइम शुरू होता है अब। राइट, वेलकम बैक टू द स्टूडियो। हमारे साथ हैं जावेद मियादाद, ऑफ कोर्स फॉर्मर कैप्टन, और हम उनसे अभी यही बात कर रहे थे। जाने से पहले एक आखिरी में आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि क्रिकेट अब इतनी बदल गई है फ्रॉम व्हेन यू प्लेड अंडर 19 क्रिकेट। अब आजकल की जो अंडर 19 लॉट है, सबसे ज़रूरी क्या आप इनको एडवाइस देंगे फॉर देयर करियर? पहले तो क्रिकेट को रीड करें, अंडरस्टैंड करें कि क्रिकेट कहती क्या है। क्रिकेट बात करती है, तो लैंग्वेज हर चीज़, इसको आपने क्या करना है, तो वो जब बात करेगी तो आपने जवाब कैसे देना है। तो इस तरीके से भी आप है ना इस गेम को ले सकते हैं, और लेना चाहिए कि आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप बॉलिंग क्या की, अब मुझे पता है कि ये बॉलिंग को मैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये थोड़ी आपके जहन में रह जाती है इस तरीके से। वरना तो आप जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये वो ना, तो जितना आप डीप इसको लेके जाएंगे इन योर ओन वे, आपको उतना फ़ायदा होगा। बिल्कुल, कि आपने ना कमिट करना है कि ये बात देगा तो मैंने ये नहीं, कान खुले रखने हैं। जब आप कमिट करेंगे तो आप वो चीज़ नहीं करते। ये क्रिकेट का एक वो है कि आपने अगर जो सोच लिया कि मैंने ये करना है, तो आप वही करेंगे, दूसरी चीज़ नहीं करते। तो क्रिकेट का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ यही है कि आप अपने आप को कभी ये घबराएं ना कि आउट हो जाऊंगा, इट्स नेगेटिव। बिल्कुल, आप पहले से ही अपने माइंड नेगेटिव में लेके जा रहे हैं, मैं आउट नहीं, गो एंड ट्राई योर बेस्ट। बिल्कुल, मैं करूँगा, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई विल टेक 5 विकेट। तो आपने कम्पीट करना था, यानी अपनी बॉडी को, यानी कि बॉडी सेल्फ टॉक। अच्छा, इस एज में ना ये कंसंट्रेट करना भी थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि जाहिर है ये एज ऐसी होती है, इसमें पढ़ाई भी हो रही होती है, इतना कुछ और हो रहा होता है। तो कैसे आप इनको ये सिखाएंगे कि नहीं क्रिकेट के वक्त सिर्फ क्रिकेट? देखिए, इसके साथ साथ आजकल तो देखिए क्रिकेट का बड़ा अच्छा है कि टीम के साथ बहुत सारे आपके है ना कोचेज़ भी होते हैं, फिर आपको है ना बताने वाले भी होते हैं, जो लैपटॉप भी है ये, तो ठीक है, लैपटॉप से आप देख सकते हैं अपने आप को, मगर लैपटॉप की तरह क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपके साथ जाएगा नहीं अंदर फील्ड में। क्रिकेट जो है तुमने अपने माइंड और अपने उससे खेलनी है। क्रिकेट आप खेल रहे हैं, हाँ, आपको फॉल्ट है तो वो ठीक है, राइट। डोंट गो एग्जैक्ट के भाई ये वो तो इतनी स्लो में बताता है, वो चीज़ कभी होती नहीं है। बिल्कुल, तो उससे क्या होता है कि बच्चों का सीधा है। मैं बिलीव करता हूँ कि नेट में ले जाए, हाँ, खेलो, जितना तुम खेलोगे उतना पॉलिश हो, अपनी गलती खुद पकड़ोगे। जब तक अपनी गलती खुद नहीं पकड़ोगे, आप कभी भी ऊपर नहीं जाते। बिल्कुल, तो आपको समझ भी नहीं आती। मैं आपको बता सकता हूँ, खेल नहीं सकता। बिल्कुल, तो इनको चाहिए कि एक तो मैच देखें, बिल्कुल,
बच्चों को चाहिए कि जो बड़ी बड़ी प्लेयरों की इनिंग्स हैं उनकी मूवमेंट देखें कि ऐसा ही है। उनकी मूवमेंट क्या आती है, पहला पैर कौन सा आ रहा है, ऐसा ही है। बैकफुट पे कौन सा जा रहा है, ये कट खेल है तो इनका बल्ला कहाँ से आया है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, और वो आपसे बहुत बेहतर सीख सकेंगे। लेकिन जावेद मियांदाद किस तरह के मेंटर हैं? नरम मिजाज मेंटर हैं, सख्त मिजाज मेंटर है, किस तरह आप इंटरैक्ट करेंगे प्लेयर्स के साथ? नहीं बिल्कुल, मैं तो देखें ना, जो चीज़ मेरे पास है वही डिलीवर कर सकता हूँ, वही चीज़ बता सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास थी, अल्लाह का शुक्र था कि बड़े सक्सेसफुल रही। बिल्कुल। और उसको एडमायर तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो मैं अपनी क्रिकेट में मैंने खुद अपने आप को किया, मुझे किसी ने बताया नहीं। हाँ, मेरे घर से मुझे है ना, माय फादर अल्लाह बख्शो उनको, वो या भाई थे, फैमिली क्रिकेट बोल रहे। बाकी माय फादर यूज्ड टू के हाँ आज कितना क्या बड़ा क्या, मैंने 100 किए, अच्छा आउट या नॉट आउट, आउट। 100 के बाद कोई आउट होता है? यानी कि उन्होंने उस वक्त मुझे कि भूख बढ़ाई। ये बात हमारे करंट चेयरमैन ने भी एक बार शेयर की थी कि उन्होंने कहीं आई थिंक इंडिया में कहीं 100 मारे थे और उसके फौरन बाद आउट हो गए, तो कप्तान ने बोला कि क्लब क्रिकेटर की मेंटालिटी कब छोड़ोगे, ये 100 किया और आउट 100 के बाद 150 करो, 150 के बाद 200 करो और नॉट आउट आउट। बिल्कुल नॉट आउट बच्चों को मैं यही कह रहा हूँ जो सुने कि ऑलवेज ट्राई एंड कम नॉट आउट। नॉट आउट का मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्ड रहता है। सही, क्योंकि आप आउट नहीं हुए तो नेक्स्ट मैच में जब आप जाओगे तो यू विल गो विद द बिग हार्ट। बिल्कुल। वरना आपने अगर 0 किया वो तो नर्वस, वो भी नहीं होना चाहिए। तो लड़कों को मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, इनको जाके अपने मैचेस खेलना चाहिए, कुछ इस तरह से प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे जैसे मैच खेल रहे हैं, क्योंकि मैच प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में बड़ा फर्क है। प्रैक्टिस उसके लिए तो ठीक है जो नेट में जो करते हैं कि आपको सिर्फ अपना ना थोड़े से खेलने हैं, मगर प्रैक्टिस में आप सीखते नहीं है। सीखेंगे तो आप ऑफ एक पूरी विकेट होती है ना, बिल्कुल उस तरह से खेलना चाहिए। प्रैक्टिस भी उस तरीके से कर रहे हैं, आपके बैकग्राउंड है तो उसी तरह के, तो उसमें क्या बॉलर को भी पता चलता है, आपको शॉट मारते हैं वो भी पता चलता है कहाँ जा रही है। नेट्स में आपको नहीं पता चलता, बिल्कुल डूब जाती है, पता नहीं चलता। तो कितनी चीज़ें हैं, तो ये यंगस्टर्स हैं, इनका काम है ज़्यादातर अपना टाइम जो है पढ़ाई, एजुकेशन और उसके बाद आपका खेल जो भी आप पिक करते हैं। चलें, लेट्स गो बैक टू ज़ैनब नाउ। थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली पिक जो है वो थोड़ी हर्डल्स के बाद फाइनली जो है वो डिसाइड हो गई है, तो आइए देखते हैं कौन है। अच्छा जी, गवादर शार्क्स टुक देयर स्वीट टाइम। आई हैव टू से कि बड़ी डिलिब्रेशन हुई है कि किस को पिक करेंगे। इफ यू कुड प्लीज हैव द नेम। मोहम्मद इस्माइल, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, सदर्न पंजाब से इनका ताल्लुक है। अंडर 19 राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और अब ये गवादर शार्क्स के लिए खेलेंगे। सो इफ यू कैन नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम व्हिच इज हैदराबाद हंटर्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है जी, टाइम अपना वो ले रहे हैं हैदराबाद हंटर्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं मेंटर्स बड़े ज़बरदस्त मौजूद हैं। शुएब मलिक ने तो आके ऑलरेडी ही इज़ ऑलरेडी शेयर्ड हिज थॉट्स। शायद अफरीदी इज़ नॉट हियर, बट द फैक्ट दैट ही इज़ पार्ट ऑफ दिस लीग, आई एम श्योर दैट a lot of these youngsters that are sitting here, they really look up to him and will learn a lot from him. फॉरेन प्लेयर्स भी जो हैं यहाँ पे मौजूद होंगे, बहुत से फॉरेन प्लेयर्स आर इन्वॉल्व्ड। मेंटर्स तो आपको मैंने जैसे बताया, विव रिचर्ड्स हैं, शुएब मलिक, शाहिद अफरीदी, सच ह्यूज नेम्स दैट ऑल दीज यंगस्टर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम। कैटेगरीज का मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। फॉर दोज ट्यूनिंग इन, एलीट, प्रीमियर एंड एक्स फैक्टर आर द 3 categories. The elite category includes high profile players. बाकियों का जो है प्रीमियर का मैंने बताया था, they need to have significant age group cricketing experience. They should have been part of pathway cricket and associate member boards वाले जो हैं वो X factor category में। Right, we're ready with the name. हाँ जी, लोअर मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी हैं और राइट आर्म फास्ट बॉलर भी हैं। इज़ाई
Thorn from West Indies. Great to have a bit of the Caribbean flavor in PJL as well. Congratulations to Izai. And now, if we can move on to the next team and the last pick of this category, Mardan Warriors, your time starts now. Okay, here we are. So, इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो मैं शायद जानता भी हूँ, उनको देखा भी है, कुछ ऐसे जिनका नहीं पता. तो इस में मैंने तस्वीरें जाके सबके साथ खिंचवा लेनी है क्योंकि कल ये सुपरस्टार बन जाएंगे तो फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा हमें. मौका नहीं मिलेगा, मौका तो मिलेगा, वो नहीं देंगे तस्वीर, बिजी हो जाएंगे. फरहान आ चुके हैं रोहा, और फरहान के पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन होगी. वैसे तो नाम काफ़ी हो गए, 23 हो गए, ये लास्ट पिक है इस कैटेगरी की. ओवरऑल जो अभी तक जो फॉर्मेशन बनी है उनको आप देख रहे हैं, वेरी बैलेंस्ड. ये लड़के जो कप्तान अनाउंस हुए हैं, इनकी क्रिकेट इतनी है कि ये हैंडल करेंगे इस लेवल पर. जी हाँ, इसमें जो कुछ कैप्टन ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में जो अंडर 19 हुआ है उसमें कप्तानी की है. जो ज़ैर मुमताज़ हैं गुजरावाला के, वो सदर्न पंजाब की टीम के कप्तान हैं. और ये वो लोग हैं जिन्होंने वाकई लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की एग्जांपल सेट की है. जो हमारा डोमेस्टिक सीज़न गया और जूनियर लेवल पर आपको पता है कि इतना सारे एक ही एज ग्रुप के लड़के होते हैं, तो उनको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल होता है कि सीनियरिटी का लेवल नहीं होता. तो उस लिहाज से काफ़ी बेहतर पिक्स हैं जो एज ए कैप्टन तमाम टीमों ने की है. Okay, Roha, are we ready with a new name? Yes, I guess so. Let's go and find out who that name is. Right, Mardan Warriors, please reveal आपके कौन से प्लेयर हैं. जी, आबिदुल्ला राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं. नॉर्दर्न अंडर 19 से जो है इनका ताल्लुक है. सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आबिदुल्ला, एंड उम्मीद करते हैं कि आप अपनी PJL जर्नी में बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे. अच्छा जी, that wraps up the category and it's back to the studio with you guys. All right, so here we are. Now we've completed the first category. Roha, 24 picks in the elite category. I think is shaping up now. It really is. It really is. Teams are stacking up really nicely और काफ़ी deliberation हमें देखने को मिली कि ऐसा नहीं था कि बस वो haphazardly कर रहे हैं. काफ़ी सोचा जा रहा था एक एक नाम के बारे में, और I'm sure strategies जो हैं वो already in place हैं, combinations भी बन गए हैं. So we're all geared up for a very exciting competition. There we go. Bahawalpur Royals का squad अभी तक elite so far. Arham Nawab, Nathan Edwards, Ubaid Shahid and Sajad Ali. So there's one foreign name in there. Farhan, what do you have to say about this elite panel Royals का अभी तक का? ये इनमें जो 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ये बड़े अच्छे परफॉर्मर रहे हैं. अरहम नवाब, इनका ताल्लुक फैसलाबाद से, ऑफ स्पिन करते हैं. अभी जो कॉलेज चैम्पियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी सेंट्रल पंजाब के लिए. उबैद शाहिद का ताल्लुक लाहौर से और ये अंडर 13 से कप्तानी करते हुए आ रहे हैं. इन्हें कप्तानी का भी एक्सपीरियंस है और हर लेवल पर इन्होंने परफॉर्म किया. और जो तीसरे सज्जाद अली हैं, इनका ताल्लुक कोयटा से है और अभी सिकंदर ये वहाँ पर नेशनल T20 में भी थे. जो अक्सर हम देखते थे कि ड्रिंक्स लेकर आते थे कोयटा के, तो वो ये कोयटा की टीम बलूचिस्तान की टीम के साथ है. तो ये चारों बड़ी अच्छी पिक्स हैं जो अभी तक हमने देखी हैं भावलपुर की तरफ से. Okay, here we are now talking about the next. But by the way, can you say Bahawalpur again? Because I think it's a tongue twister for you. It really is. Don't put me on the spot like that. It's Okay. Bahawalpur, but I think we're past that now. Yeah. Gawada Sharks, a very interesting team name, Sikandar. 2 players from England, of course, Daniel Ibrahim, I should say, and Joseph Eklund. Hasib Nazim and Mohammed Ismail are from Pakistan. And the next one is the Gujarat Giants. And who do they have in the elite category? Ali Asman, we know about him. Azan Owais, Tom Aspinwall, he's from England. And Uzair Mumtaz. Uzair Mumtaz has been announced as the captain of Gujarat Giants. Right, Mardan Warriors की elite picks पे एक नज़र डालते हैं. So there's Abbas Ali, Abidullah, Archie Lenham and George Thomas. इनकी भी 2 पिक्स हैं. अंडर 19 खेल चुके हैं जॉर्ज जो है इंटरनेशनल. फरहान, one word अगर आप डिस्क्राइब करें इनकी एलीट पिक्स को वॉरियर्स की. ये अब्बास अली जो भी खैबर पख्तूनख्वा ने चैम्पियनशिप जीती है, ये वो उनके कप्तान थे. अच्छा. KP के.
तो ये भी बड़ी अच्छी पिक है। और इससे पीछे जो 2 पिक्स हुई हैं, दानियल इब्राहिम का हमने नाम देखा। और अगर 90s की क्रिकेट सिकंदर ने ज़रूर फॉलो की होगी, जो पाकिस्तान अंडर 19 की जो टीम थी, जो इसमें शाहिद अफरीदी भी थे, उसमें एक प्लेयर खेलते थे काशिफ इब्राहिम, ये उनके साहबजादे हैं दानियल इब्राहिम। वाओ, गिविंग अस ऑल द इनसाइड ट्रिविया। अगला जो है वो एलीट पैनल देखते हैं। वी हैव अनदर टीम वेरी नाइसली स्टैकिंग अप, हैदराबाद हंटर्स, हु हैव पिक्ड देयर एलीट पैनल। सिकंदर, ये भी कैरेबियन का एक टच अपनी टीम में जो है वो लेके आए हैं। Yes, Isaiah Thorne. Yeah. And then he's from the Caribbean. We can see the flag. 3 from Pakistan. It's good to see flavor from around the world, and these cricketers will surely learn something from the local boys, and the local boys will also have a lot to Of grab course, from and them. Captain Saad Beg has been announced as well, so you know a big opportunity for him. Rawalpindi Raiders के elite picks जो हैं, अफनान खान, अली शाख, हबीबुल्लाह एंड हसन एसाकिल। फरहान, क्या कहते हैं अभी तक रावलपिंडी के elite squad के बारे में? ये हसन इसखिल, मोहम्मद नबी जो इस वक्त कैप्टन है अफगानिस्तान के, उनके साहबजादे हैं। देखिए, एक मैंने इन्फॉर्मेशन दी तो सिकंदर ने फ़ौरन उसको काउंटर किया और उन्होंने एक और दिया। तो जी हाँ, ये वही खिलाड़ी हैं जिनके बैकग्राउंड भी है, जिनके पेरेंट जो फादर खेलते रहे हैं। और इसके अलावा जो 7 बेग हैं, इनकी हमने बात की कि ये इनके कप्तान अनाउंस हुए हैं। तो कराची की क्लब क्रिकेट में अभी से एक बड़ा नाम बन चुके हैं 7 बेग, और आई होप के जब ये PJL होगा तो इसमें भी ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ये बैट्समैन है या बॉलर है? 7 बेग जो है वो कीपर हैं और 7 इनिंग्स का आगाज़ करते हैं। ओके, ग्रेट। चलें, थैंक यू फरहान, हमें आपने ज्वाइन किया, इतनी इंटरेस्टिंग। आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। अ लॉट मोर पिक्स टू अनपैक। अभी एलीट कैटेगरी हुई है, अभी प्रीमियर कैटेगरी और एक्स फैक्टर कैटेगरीज रहती हैं। सो स्टे ग्लूड टू योर स्क्रीन्स। वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी बैक विद द रेस्ट ऑफ द पिक्स फॉर द ड्राफ्ट ऑफ द पाकिस्तान जूनियर लीग 2022. स्टे विद अस। Short break.
Hello and welcome, and here we are once again, continuing from where we left off. Just to let you know that the elite category that has been done, 24 picks have been made, and the teams are now shaping up the 6 sides that are participating in the Pakistan Junior League, which is the PJL 2022. It's going to be from the 6th to the 21st of October at the Gaddafi Stadium, Lahore. It features players from under 19. Now, if you are of the age, well, starting at 1st September 2003, till date, if you are 19 or under 19, you are eligible for that. Lots of people have put in their names, lots of players, around 170 foreign players and 250 plus local players. Roha is alongside me. We've got mentors, Roha. We've talked about the teams. Once again, for those who are joining us right now, we'll tell you, we've got 6 teams participating, 19 matches will be played. We've got Rawalpindi Royals, Imran Tahir is their mentor. Gujarat Giants, Shoaib Malik is the mentor. Hyderabad Hunters are with Darren Sammy, and Gawada Sharks are with Viv Richards, and you've got Mardan and Rawalpindi with you. Of course, mentors, they're a very important part of this entire experience. Shahid Afridi, of course, is mentoring the young ones in Mardan Warriors, while Colin Munro, the modern T20 great, he is with the Rawalpindi Raiders. So plenty of exciting content coming up, because this platform, this journey, this is for the young ones, you know, aged 19 or less. Lekin yahi baat hai ki mentors are going to be playing a very decisive role, a very exciting role, and as Chairman Ramesh Raja himself said, कि वो एक तड़का है इस पूरे एक्सपीरियंस पे. सो आई थिंक ये तड़का जो है ये देखने में भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा. यू नो, लुकिंग एट द प्लेयर्स एंड हाउ देयर सिटिंग हियर, देयर ऑलरेडी सो एक्साइटेड टू शेयर द रूम विद सच ग्रेट्स. अभी आधे तो ग्रेट्स आए भी नहीं है, बिकॉज यू नो वी आर स्टिल एंटिसिपेटिंग के जो हमारे ओवरसीज मेंटर्स हैं वो भी आएंगे एज द लीग प्रोग्रेसेस ऑफ कोर्स. लेकिन ये तड़का जो है ना सिकंदर, ये बहुत ज़रूरी है. और ये मेंटर्स के जो कप्तान है वो हैं जावेद मियादाद साहब, क्योंकि सारी टीम्स के मेंटर्स हैं. किंग. यस, ऑफ कोर्स. तो उनसे हमारी बातचीत हुई, हमने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा से बात की, सीईओ फैसल हसनैन साहब से बात की. तो 24 प्लेयर्स जो कि होने थे एलीट कैटेगरी में सिलेक्ट, 4 पर टीम, वो हो चुके हैं. कुछ ने कैप्टन्स भी अनाउंस कर दिए हैं अपने टीम्स ने. और उसके अलावा हमारे पास ऑफ कोर्स हमारे साथ बाहर मौजूद हैं टीम्स के हेड कोचेस भी हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं. अब्दुल रज़ाक हैं, मुश्ताक अहमद हैं. देन देयर आर सम प्लेयर्स हु हैव जस्ट रिसेंटली रिटायर्ड. मोहम्मद समी हैं उसमें, जो कोई कपल ऑफ ईयर्स अगो पीएसएल में फीचर कर रहे थे. So many people are involved in this, and they're out there to support these under 19 boys. Of course, a lot of exciting cricket coming up, a lot to unpack here. और हमने भी अभी 24 picks जो है वो देख ली हैं. We went for a bit of a break. We're back now in the studio. We have our cups of tea with us here, and now we're ready to go back to Zainab Abbas, who is going to start announcing the draft picks for the next category, which is the Premier category. So over to you, Zainab. Take it away. Thank you guys. Welcome back after the break. I'm sure कि आप लोगों ने रोटी शोटी खा ली होगी, पेट शेट भर लिया होगा, but we have a very, very important round coming up, which is called the Premier category of picks. 30 spots are up for grabs, and सबसे पहली pick in this round goes to गुजरावाला. गुजरावाला, आपका टाइम शुरू होता है अब. डिस्कशन चल रही है. एजाज अहमद साहब के शक्ल पे एक बहुत बड़ी स्माइल है. इसका मतलब है कि दे आर प्रीटी श्योर ऑफ हु दे वांट टू गेट. आई थिंक प्रीटी मच डिसाइड कर लिया है. दे आर ऑल श्योर ऑफ हु दे वांट. एजाज चीमा विद ऑल द एक्सपीरियंस बॉलिंग में आई एम श्योर सजेशंस दे रहे होंगे किसको लेना चाहिए, किसको हम अपना एक्सपीरियंस पास कर सकेंगे. All right, गुजरावाला जायंट्स का नाम आ गया है मोहम्मद इब्तिसाम.
right-handed batter and right arm medium fast bowler as well. So बहुत मुबारक हो मोहम्मद इब्तिसाम को. And now we can move on to the next pick, which is going to be Gwadar Sharks. आपका टाइम शुरू होता है अब. Right. Discussions चल रही हैं इस कैंप में. मुशी भाई जो हैं अपने राय का इजहार कर रहे हैं कि किसको पिक करना चाहिए. But they seem to be pretty certain on who they want. They haven't taken much time. Time अभी तक आपको नजर आ रहा है चल रहा है, लेकिन यहाँ पे लगता है कि कोई इतनी confusion नहीं है. Everybody is on their laptops. अच्छा जी. अच्छा जी. We've got the name. We've got the name. गवादर शार्क्स ने पिक किया है अरफात मिन्हास को, एंड ही इज सदर्न पंजाब अंडर 19 खेल चुके हैं, एंड ही इज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन. और क्या कहते हैं, बॉलिंग भी करा लेते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स. सो दे हैव समबडी हु हैज ऑल राउंड एबिलिटीज. अच्छा जी, अब चलते हैं रावलपिंडी की तरफ. रावलपिंडी, आपका टाइम शुरू होता है अब. कर रहे हैं कौन सा प्लेयर उन्हें लेना है. याद रहे एलीट कैटेगरी की पिक्स हो चुकी हैं और इस कैटेगरी की जो पिक्स हैं वो अभी तक जारी हैं. एंड थोड़ा सा हमने आपको एजुकेट भी किया था अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज दैट वी हैव गॉट. किस किस्म की कैटेगरीज है. एलीट इंक्लूड्स हाई प्रोफाइल प्लेयर्स जिन्होंने नेशनल अंडर 19 टीम में हिस्सा लिया हो और हैव मेड सम काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन अ डोमेस्टिक लेवल. And then we also have Premier. अब हम Premier पे आ गए हैं, which includes players who've played age group cricket उन्होंने खेली हुई है. They have that kind of experience. Pathway cricket का experience हो उनको. और X Factor associate member board के players हैं, as well as local promising local talent. Okay, we have a name. Ali Raza. हाँ जी. Right arm, medium, fast, Ali Raza, Rawalpindi Raiders. Congratulations to you. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. And now we move on to the next pick, which is Hyderabad Hunters. Hyderabad Hunters, आपका टाइम शुरू होता है अब. All right, Hyderabad Hunters. Hyderabad Hunters have selected Hasibur Rahman. He's a right arm off break mystery spinner है. कराची से इनका ताल्लुक है. Obviously he plays there and National 3-day में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी. सो बहुत बहुत आपको मुबारक हो. आपको ये चांस मिल रहा है कि आप PJL में परफॉर्म करें. Right, मर्दान, are you ready? आपका टाइम शुरू होता है अब.
सीरियस डिस्कशन चल रही है यहाँ पे। अब्दुल रहमान साहब जो हैं अपनी इनपुट दे रहे हैं। मेरा ख्याल से डिसाइड तकरीबन हो चुका है। चले जी, मर्दान वॉरियर्स, दाऊद नजर राइट हैंडेड बैट्समैन, नॉर्दर्न अंडर 19 पे जो है वो फीचर कर चुके हैं, विकेट कीपर है एंड ही इज द विकेट कीपर फॉर नॉर्दर्न। बहावलपुर, आपकी बारी आ गई है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राइट, नाम जी बताएं। बहावलपुर रॉयल्स, मोहम्मद जीशान, राइट आर्म मीडियम फास्ट, सेंट्रल पंजाब। 16 साल की उम्र है इनकी, only 16 years old and will now feature for them. So many congratulations and it's back to you guys in the studio. Thank you, Zainab, and thank you very much to our producer for walking in front of us. But anyway, well, we are into this premier category. We know about this and we've heard a few names. Farhan Nisar भी हमारे साथ आ चुके हैं, रोहा तो है ही। और ये जो नाम हमारे पास आ रहे हैं, the clubs tell you that these are performers in their own zone, in their own areas, and they are very happy. Of course, I can see them from here in the glass that they are very excited, cheering each other on because they've been teammates in various places, and it's a big moment for them. So congratulations to those who've been picked up, and to those who are watching this transmission very carefully. Keep your fingers crossed, your name might come up. फरहान, जो नाम अभी तक आए, हम प्रीमियर कैटेगरी की बात करते हैं, इसमें भी काफ़ी ऐसे नाम हैं जो अपने रीजन में परफॉर्म करके आए हैं, और ऑब्वियसली ये बैलेंस और अच्छा होता जा रहा है आफ्टर द एलीट कैटेगरी। किसी एक टीम को आप पिक कीजिए, किसी एक ऐसे प्लेयर को जिसको आप कहते हैं कि समवन टू लुक आउट फॉर इस कैटेगरी में। देखिए, अभी जो प्लेयर अली रज़ा जो है रावलपिंडी ने पिक किया है, ये फास्ट बॉलर हैं सेंट्रल पंजाब के, और इनकी एज सिर्फ 14 साल है। अच्छा, तो एक 14 साल का बच्चा जब इधर PJL में खेलेगा, और चेयरमैन साहब ने इसे बताया कि फाइनेंशली इसकी बहुत ज़्यादा इससे हेल्प होगी प्लेयर्स को, तो ये तो एक ऐसा है कि जो ख्वाब में भी इन बच्चों ने आज से कुछ महीने पहले ये बात नहीं सोची होगी थी कि इतनी बड़ी उन्हें लाइमलाइट मिलेगी। और बाकी भी जो पिक हुए हैं, मोहम्मद साहब हैं, ये बलूचिस्तान के हैं, ऑलराउंडर हैं, और ये PJL में आपको नज़र आएंगे। उसके अलावा अरफात मिनहास, ये बड़े प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर हैं, सदर्न पंजाब से इनका ताल्लुक है। तो ये तमाम जितने खिलाड़ी पिक हुए हैं, मोहम्मद जीशान है, ये राइट आर्म फास्ट बॉलर है। तो लेकिन मेरे इस पिक में जो है वो अली रज़ा हैं, जो 14 बरस के हैं और वो PJL खेलेगा। चलें, 14-year-old अली रज़ा, कंग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर एटलीस्ट मेकिंग इट टिल हेयर, और आगे जो भी इनका फ्यूचर है PJL में, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम। अभी ज़ैनब अब्बास इज रेडी विद द नेक्स्ट पिक। जी बिल्कुल, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ अली रज़ा को देखने के लिए। एज आपने सुना होगा, फरहान ने कहा इज ओनली 14 years old, सो ऑल द बेस्ट टू हिम। हैदराबाद हंटर्स, आपका टाइम अब शुरू होता है। वी स्टार्ट अगेन, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लगता है हैदराबाद हंटर्स ने अपनी डिसीजन
काफ़ी जल्दी कर लिए क्योंकि वहाँ से मुझे थम्स अप्स आ रहे हैं. So, do we have the name? मुनीब वासिफ, सेंट्रल पंजाब से इनका ताल्लुक है. 19-year-old, right-handed batsman, right arm, medium fast bowler. बहुत बहुत आपको मुबारक हो. You will now be featuring in PJL. चलें जी गवादर शार्क्स, आपके पास मौका है to make your next pick and your time starts now. डिस्कशन चल रही है बहुत इंटेंस किस्म की गवादर शार्क्स की. A lot of deliberation. All the experience in the world is sitting near Gavadar Sharks, and let's see who they pick. Remember, just a reminder, we are into the Premier category now. Yeah, they have their hands up. Gavadar के हाथ उठे हुए हैं. उनकी मेरा ख्याल है कुछ शायद टेक्निकल एरर हुआ है. प्रीमियर कैटेगरी में इस वक्त हम लोग कर रहे हैं. प्रीमियर कैटेगरी का आपको बताया भी था एग्जैक्टली क्या है. ठीक है, we can resolve this in just a bit. It's back to you guys, Sikandar and Roha in the studio. Thank you, Zainab. We're always here to save you. Yeah, there's a bit of time that's being taken with that pick, but of course हम यही बात कर रहे थे कि एक पिक जो है वो बड़ी important है क्योंकि ये मौका है टीम कोचेस के पास और मेंटर्स के पास कि वो सबसे अच्छे और एक्साइटिंग कॉम्बिनेशंस बना सके. क्योंकि जाहिर है ये प्लेयर्स की जो ग्रूमिंग है उसके बारे में तो ये है ही, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ स्टिल अ कॉम्पिटिशन. एवरी टीम वांट्स टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड और जीतना चाहती हैं ये टीम्स. ख़ास तौर पे जो छोटे शहरों से टीम्स हैं, बहावलपुर, गुजरावाला, ग्वादर, इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है. सो आई एम श्योर कि ये सब जो है मेंटर्स जो हैं, दे आर पुटिंग देयर हेड्स टुगेदर राइट नाउ टू क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल 11 दैट दे कैन. तभी थोड़ा टाइम लग रहा है. सो फरहान थोड़ा और हमें अब बताएं, वॉक अस थ्रू some of the other hot picks that you have. अभी अली रज़ा की आप बात कर रहे थे. जी, अभी मुनीब वासिफ जो है पिक हुए, इनका ताल्लुक भी सेंट्रल पंजाब से है. राइट आर्म फास्ट बॉलर है और ये भी एज ग्रुप की जो क्रिकेट है वहाँ से होते हुए आए हैं कि बिल्कुल नया नाम नहीं है. ये अंडर 16 वगैरह 13 से खेलते हुए आए हैं. और इस अभी तक की PJL की अच्छी बात यह है कि तमाम खिलाड़ी वो हैं कि जो ग्रेजुअली परफॉर्म करते हुए यहाँ तक आए हैं और उन्हें आप कह सकते हैं कि उनकी जो मेहनत का सिला है वो आज के दिन मिल रहा है. कि बिल्कुल आउटसाइडर नहीं है ये, इसी सिस्टम से ये चलते हुए यहाँ तक पहुँचे. बिल्कुल बिल्कुल. और उनके माँ बाप की भी इतने सालों की उनकी होप्स, उनकी ड्रीम्स हैं, वो सारी उनका सिला आज एक दफ़ा फिर मैं याद कराती जाऊं कि जो प्लेयर्स एलीट कैटेगरी में पिक नहीं हुए थे वो ऑटोमेटिकली रेलीगेट हो गए हैं इन द प्रीमियर कैटेगरी. सो दे आर नाउ अप फॉर ग्रैब्स एज वेल. तभी सिकंदर आई थिंक इतना ज़्यादा डेलिब्रेशन जो है वो चल रही है. But I'm hearing that the first pick has been decided finally. So let's go back to Zainab, who is I'm sure eager to announce the next name. Ji Zainab, over to you. बताइए क्या नाम है? Right, leg spin all-rounder Luke Martin Benkenstein. He's from Gloucestershire. So many congratulations, leg spin all-rounder है. And what a handy player to have, somebody who is a leg spinner and can bat a bit as well. Like I said, leg spinners की तो आजकल हम देख ही रहे हैं, लीग्स में जो है वो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं. So अब टाइम आ गया है बहावलपुर का. बहावलपुर, your time starts now. बहावलपुर डीप डिस्कशन में इस वक्त मौजूद हैं. इमरान फरत इज देयर बैटिंग कोच. डिस्कशंस चल रही हैं यहाँ पे. कुछ प्लेयर्स भी जो हैं उनके कैप्टन, वाइस कैप्टन जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं. दे आर हैविंग अ लॉन्ग डिस्कशन कि किसको पिक करना चाहिए.
अच्छा जी, टाइम अप हो गया है. All right, can we have the name? We have the name with us. Rehan Ahmed, leg spinning all-rounder from England. इनको मैंने देखा था. He was also present at the 100 and he is a really bright prospect for the future. And it's actually a tremendous pick. So congratulations to you guys. मर्दान वॉरियर्स, अब आपका टाइम स्टार्ट हो गया है. मर्दान वॉरियर्स, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या डिलिब्रेशंस हो रही हैं. प्रीमियर कैटेगरी की पिक्स इस वक्त जारी हैं. इन केस यू गाइस हैव जस्ट ट्यून्ड इन एंड लेट्स सी कि इस पिक में इस राउंड में कौन पिक होता है. अच्छा जी, मर्दान वॉरियर्स, हसीब खान, खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है. राइट हैंडेड बैट्समैन. बहुत बहुत आपको मुबारक हो. चलें जी, गुजरावाला साइड तैयार हैं आप? आपका टाइम शुरू होता है अब. Right, are we ready? We are ready with the Gujarat Giants. Ariful Islam, right-handed बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है. राइट-हैंडेड बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है. और ये भी आप याद रखेंगे, जो अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी इन्होंने फीचर किया है. पार्ट द नेशनल अंडर 19 टीम फॉर बांग्लादेश. So huge congratulations to him. I'm sure it's a fantastic opportunity. Now moving on, रावलपिंडी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. डिस्कशन जारी है. कैप्टन भी मौजूद हैं रावलपिंडी रेडर्स के. I think they're pretty certain though who they want. Right, we have the name Kai Smith, wicket-keeper batsman from England age group cricket. उन्होंने वहाँ पे खेली है और plays for UAE 11 में भी इनका जो है you'll see him there. Wicket-keeper batsman Kai Smith from England. Many congratulations to you. And back to you guys in the studio to tell us a little more about all these players. Right, Kai Smith has been picked. Pick number 3, I guess, he है Premier category, if I'm not wrong. 2.
सॉरी माय बैड। फरहान बैठे हैं यहाँ पे। टेल अस समथिंग अबाउट काई स्मिथ, कैसा एडिशन होंगे ये टू द स्क्वाड? विकेट कीपर बैठे रहे इंग्लैंड के हैं और अभी तक बहुत ज़्यादा विकेट कीपर्स हमने अभी तक देखे नहीं हैं इन पिक्स में। 7 बेग थे जो पहले पिक हुए और रावलपिंडी रेडर्स ने इनको पिक किया और इनकी जो पहली 3 पिक्स थी वो अवार्ड विनिंग प्लेयर जिन्होंने लिए थे। एक हबीबुल्ला, अफनान खान और अली इसाक, ये 2 टॉप बैटर्स थे अंडर 19 कप और चैम्पियनशिप के, और एक टॉप ऑलराउंडर थे। तो ये टॉप प्लेयर्स पे जा रहे हैं। मसरूर इनके कोच हैं। और इसके अलावा बहावलपुर रॉयल्स ने रेहान अहमद को लिया है जो इंग्लैंड के लेग स्पिनर है। और मैं बड़ा सरप्राइज था कि ये पहले राउंड में क्यों नहीं पिक हुए। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले और अभी इंग्लैंड में एक लीग खेली जा रही है, उसमें इन्होंने बहुत धूम मचाई हुई है। और कुछ अर्सा पहले इनके जो कोच है उन्होंने इनकी वीडियोस भेजी थी। अच्छा। तो आज यकीनन उनके कोच भी खुश होंगे कि ये PJL का हिस्सा बने हैं। चलिए, स्पिनर हैवी लग रहे हैं आज टीम्स के जो टैक्टिक्स हैं, और होने भी चाहिए बिकॉज यू नो दिस इज वेयर क्रिकेट इज गोइंग राइट नाउ, दैट्स वेयर इट्स हेडेड। स्पिनर्स आर इन डिमांड सिकंदर, और अभी भी सारे जो यंगस्टर्स हैं, some of them are still out there waiting to be picked, and let's go and see अब next draft pick कौन सी है। over to you Zainab. All right, next जो हमें नजर आई है वो है रावलपिंडी रेडर्स की कैटेगरी प्रीमियर राउंड 3। आपका टाइम शुरू होता है अब। Right, if you could please have the name now. We have the name. Left-handed batsman Asir Mughal, Northern Under 19 से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत आपको मुबारक हो असीर। क्या wonderful opportunity आपके पास to play PJL and make a name for yourself. Right, moving on, we can now go towards Gujarat Giants. Gujarat Giants, आपका टाइम शुरू होता है अब। राइट, यहाँ पे इस वक्त डिस्कशन चल रही है। ऑब्वियसली कुछ डिलिब्रेशन हो रही है जायंट्स की तरफ से। सो ओवर टू यू गाइस वंस अगेन टू टॉक अबाउट एग्जैक्टली अभी तक क्या कॉम्पोजिशंस बनी हैं, टीम कॉम्पोजिशंस। Thank you, Zainab. When you look at these teams that have formed up till now, I'm just noticing if we go back to the elite category, Farhan, वहाँ पे देखते हैं we've got 4 spots in each team और I think 4 जो हैं foreign players हर टीम के 15 के स्क्वाड में आ सकते हैं। सबने बराबरी से ही पिक किया है, apart from 1 or 2 जिन्होंने foreigner 2 पिक कर लिए हैं elite में, वरना सबने एक ही रखा है fair balance। जी बिल्कुल, तमाम टीमों के पास एक ही है और सिर्फ एक टीम ऐसी है जिसके पास 2 फॉरनर है। तो अभी क्योंकि ये कोचेस डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे और जो नेशनल अंडर 19 चैम्पियनशिप हुई उसमें ये टीमों के हेड कोच थे, तो इनका ज़्यादा फोकस जो अपने प्लेयर्स हैं, जो एलीट में पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जो जिनको इन्होंने देखा हुआ है परफॉर्म करते हुए, उन पर ज़्यादा इनका ट्रस्ट है। लेकिन आगे चलकर हम इसी प्रीमियर कैटेगरी में देखेंगे जो फॉरेन प्लेयर हैं वो भी हमें दिखाई देंगे, लेकिन पहला ट्रस्ट इन्होंने जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उन पर किया।
तो इसमें नॉन अंडर 19 भी हैं, काउंटी प्लेयर भी हो सकते हैं, फिर फुल मेंबर बोर्ड, सेकंड 11 रीजनल, ये सारे जो प्लेयर्स हैं वो प्रीमियर कैटेगरी में आते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एक विंडो है जी। और जो एलीट में नहीं पिक हुए वो भी रेलीगेट होकर प्रीमियर में आ गए हैं। तो अब ये पोल काफ़ी बड़ा जो है वो लग रहा है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि पिक्स में कोचेज़ अपना पूरा टाइम ले रहे हैं पिक करने में। और उसके अलावा मैं कहूँगा कि जो कैप्टन्स बैठे हुए हैं, कि आप भी सोचिए कि वो ड्राफ्ट का हिस्सा बन रहे हैं, और वो इतने बड़े लेजेंड्स हैं, उनको वो बता रहे हैं कि इस प्लेयर को आप ले सकते हैं, इसको ना लें। तो ये बहुत बड़ा दिन है इन कप्तानों के लिए। बिल्कुल बहुत बड़ा दिन है, और अभी कुछ नाम जो हैं वो पिक हो गए हैं, सो दे हैव अ लॉट टू सेलिब्रेट। लेकिन सम ऑफ दीज गाइज आर स्टिल वेटिंग टू बी पिक्ड एंड दे विल बी पिक्ड, बिकॉज ज़ाहिर है अभी भी काफ़ी स्लॉट्स हैं टू बी फिल्ड। ज़ैनब इज रेडी विद द नेक्स्ट नेम, सो लेट्स हियर हू दैट इज। ऑलराइट, गुजरावाला जायंट्स ने अपना सेलेक्ट कर लिया है राइट हैंडेड बैट्समैन हसनैन माजिद। हसनैन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। राइट हैंडेड बैट्समैन है एंड ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले PJL, सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। राइट, नेक्स्ट अब टाइम आ गया है मर्दान वॉरियर्स का, जहाँ पे ऑलरेडी डिस्कशन चल रही है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड लेट्स सी हु दे पिक इन द एंड। मोहम्मद समी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है who they are going to be picking. हाँ जी, a couple of nods in agreement वहाँ पे चल रही हैं, डिस्कशन जारी है, बट लग रहा है कि डिसाइड कर लिए। अच्छा जी, do we have the name? मोहम्मद नबील, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। राइट आर्म मीडियम फास्ट मर्दान वॉरियर्स के लिए आप खेलें, और बहुत ज़्यादा अपलॉज यहाँ पे, जहाँ प्लेयर्स जो पीछे बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत तालियां बजाई हैं, बहुत खुश हैं मोहम्मद नबील के लिए। सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। राइट, इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम which is Bahawalpur. Bahawalpur, your time starts now. अग्रीमेंट में हैं, वाइस कप्तान भी बैठे हुए हैं, इमरान फरत की डिस्कशन चल रही है इस वक्त कि क्या टीम कॉम्पोजिशन में कौन सा ऐसा प्लेयर है, कौन सा ऐसा रोल है जो कि अभी तक लैकिंग है। Right, we have the name Basat Ali from Balochistan, और राइट हैंडेड बैट्समैन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनके पास कि ये आएँ और PJL खेलें। चलें जी गवादर, अब आपकी बारी है। गवादर शार्क्स, आपका टाइम शुरू होता है अब।
डिस्कशंस चल रही हैं यहाँ पे इंटेंस किस्म की. All right, back to you guys. सिकंदर, you can take us through अभी तक क्या जो हमारी पिक्स हुई हैं. Okay, Zainab, thank you so much. As the coaches are, well, the think tanks, I should say, are busy finalizing the next category. फरहान से बात मैं और करता हूँ. जो अभी आपने कुछ मुझे स्पेशल चीज़ें बताई थी ब्रेक से पहले, 14 साल का लड़का भी इन्वॉल्व है इसमें, मोहम्मद नबी के साहबजादे भी इन्वॉल्व हैं. ये जो टू एंड फ्रो एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स होगा, एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट क्रिकेट एनवायरनमेंट्स होगा, ये भी अच्छा ग्रूम करेगा. ये खासतौर पर क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि जो प्लेयर्स पाकिस्तान में हैं अंडर 19 के वो तैयार हों आगे के लिए. जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन्हें कुछ प्लेयर्स हैं जिन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलता है और वही दूसरी टीम्स के साथ, लेकिन जब आप किसी के अगेंस्ट खेल रहे हो तो वो उतनी अंडरस्टैंडिंग वो नहीं बनती. लेकिन जब उसी लीग में ये बाहर के प्लेयर्स आएंगे, वो अपना कल्चर भी साथ लेकर आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उन्हें सीखने का भी मौका मिलेगा. एक तो वो मेंटोर से तो वो सीखेंगे, ऑब्वियसली सीखेंगे, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ का जो कल्चर आएगा वो भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. और 14 साल की आपने बात की तो अभी मोहम्मद नबील पिक हुए हैं मर्दान वॉरियर्स में. ये भी 14 बरस के हैं और ऑलराउंडर हैं और इनका ताल्लुक भी ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो रीजन है वहाँ से है. तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि वो तस्वीर कैसी होगी कि 14 साल के बच्चे भी खेल रहे हैं, अंडर 19 भी खेल रहे हैं, बाउंड्री साइजेस कैसे होंगे, किस तरह से ये, क्योंकि ये जब कोई पहला एक्सपीरियंस होता है तो उससे एक आइडिया लगाने के पड़ता है. हालांकि T20 इस लेवल पे खेले जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है अंडर 19 और 14 सेम स्ट्रेंथ और सेम कैटेगरी है नहीं, जेल इन हो जाएंगे बड़े मज़े से? ये देखिए, इसमें अंडर 14 में वही प्लेयर्स पिक हुए हैं कि जो अपनी एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, जिन्हें अंडर 16 से जंप करते हुए अंडर 19 में खिलाया गया और वहाँ पर परफॉर्मेंस करने के बाद वो पिक हुए हैं. कि ऐसा नहीं है कि ये कोई वाइल्ड कार्ड थे या बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर आके पिक हो गए हैं. तो इन्होंने अंडर 19 में ही परफॉर्म किया और बड़े लड़कों के साथ इन्होंने मुकाबला किया और यही वजह है कि आज ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं. मुझे लगता है कि रोहा के भी कोई जान पहचान वाले सेलेक्ट हो गए, उनके पास चलेंगी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए. इनफैक्ट यहाँ आ गई हैं. इनफैक्ट जॉइन अस, कम इन, यू गॉट टू जस्ट डक अ लिटिल बिट. एंड फरहान, अगर मैं इसको ओवरऑल देखूँ इस पिक्चर को, आई थिंक जो कोचेस यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें मुश्ताक अहमद भी हैं, जिसमें मोहम्मद समी भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इन्होंने ऑब्वियसली इन लड़कों को इतनी क्लोजली नहीं देखा होगा, लेकिन जो आपस में जब ये थिंक टैंक्स मिलते हैं तो इनकी भी एक आइडिया होगा. कोई अग्रेसिव टीम बना रहा होगा, कोई बॉलिंग स्ट्रॉन्ग टीम बना रहा होगा. ये माइंडसेट्स होते हैं. अगर हेड कोच आपका फास्ट बॉलर है या आपका लेग स्पिनर, आपने देखा है लेग स्पिन ऑलराउंडर्स बहुत सारे दिख रहे हैं. जी हाँ, और कोचेस भी अभी जब हम लंच ब्रेक में थे तो वहाँ पर भी ये डिस्कशन चल रही थी और मैं एक कोचेस के साथ ही एक टेबल पर लंच कर रहा था, तो वो इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल रही है अभी हमें. एक्सचेंज कर रहे थे कि फलां प्लेयर आप पिक कर सकते हैं, आपकी टीम का बैलेंस इससे अच्छा हो जाएगा. हमारे पास उसकी जगह नहीं है, लेकिन आप इस प्लेयर को ज़रूर पिक करें. तो वो बड़ा अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट में ये ड्राफ्ट चल रहा है. अच्छा, और कोशिश अब कोशिश की कि कोई अच्छा प्लेयर रह ना जाए, कि अगर वो नहीं पिक कर रहे तो कोई दूसरी टीम जो है वो ज़रूर उसको ले. अच्छा, इसकी टेक्निकलिटीज में भी जा रहे होंगे शायद कोचेज, आई एम वेरी श्योर, बिकॉज हाईएस्ट लेवल है ये इस एज ग्रुप का. ये अक्टूबर में हो रहा है, जाफी स्टेडियम लाहौर में हो रहा है. कंडीशंस क्या एक्सपेक्ट की जाती हैं? स्पिनर्स ज़्यादा करामद होंगे या वहाँ फास्ट बॉलर्स के लिए जो है वो सिलसिला सही रहेगा? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी बेसिस पे सिलेक्शन हो रही होंगी. जी हाँ, और दूसरा ये कि कोचेज़ भी मुख्तलिफ तरह के, उसमें आपको वो कोचेज़ भी मिलेंगे जो लेजेंड्स हैं. जैसे मुश्ताक अहमद का नाम है इसमें, इजाज़ अहमद पाकिस्तान के अंडर 19 टीम के साथ रहे हैं, और वो कोचेज़ भी हैं जिन्होंने जूनियर लेवल पर डोमेस्टिक में काम किया है. मोहम्मद मसरूर उसमें शामिल है. तो ये अब्दुर्रहमान है. तो ये एक बड़ा अच्छा मिक्स है टीम्स के पास, कि ना सिर्फ प्लेयर्स का बल्कि कोचेज़ का भी, कि जहाँ पर एक्सपीरियंस भी है, यंग कोचेज़ भी हैं, बाहर से भी कोचेज़ आए हुए हैं. तो ओवरऑल एक बड़ी अच्छी पिक्चर जो है वो हमारे सामने आ रही है. बिल्कुल. और ये कोचेज़ के बाद ऑफ कोर्स एक और इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहे हैं वो मेंटोर्स हैं. एंड आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ मेंटोर्स बिकॉज Ramiz Raja has stressed upon that कि they are the real spark, they're adding that तड़का to the league. और बहुत ज़रूरी है कि ये स्टार प्लेयर्स जो हैं इनके सुपरविजन में हमारे कल के जो नौजवान हैं, नेक्स्ट 11 जो हैं वो तैयार हों. फिलहाल ज़ैनब तैयार है with the next pick. Right, after much deliberation, काफ़ी discussion हुई है. We have the name मोहम्मद शुएब, जिनका KPK से ताल्लुक है, under 19. And he is a right arm medium fast bowler. मोहम्मद शुएब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो
आप PJL में feature करेंगे. Right. The last pick of the round today is Hyderabad Hunters, and your time starts now. Okay, time इनका ख़त्म हो गया है. We're still waiting on the name. चलें, जितनी देर we get the name reveal, can we go back to Sikandar and Roha? थैंक यू ज़ैनब. सिकंदर, अभी आप बात कर रहे थे कि मेंटोर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, एंड यू नो इमरान ताहिर इज़ द मेंटोर फॉर बहावलपुर रॉयल्स. दैट्स अ रियल टंग ट्विस्टर. तो इमरान ताहिर के अंडर 19 करियर से, बिकॉज ज़ाहिर है आज जिस मुकाम पे वो है, ज़ाहिर है अंडर 19 करियर ने उनका बहुत उनको शेप किया होगा, तो उस पर ज़रा बात करें. क्योंकि बहुत जिस मुकाम पर भी अंडर 19 करियर की वजह से हैं. ऑन द लाइटर नोट, जब 98 में वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 का साउथ अफ्रीका में, शोएब मलिक भी उस टीम का पार्ट थे, इमरान फरद भी थे, इमरान ताहिर भी. तो फिर वहीं से उनकी वो जो साउथ अफ्रीका वाली जर्नी है उसका स्टार्ट 1998 से हुआ था. उसके बाद फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले. और अंडर 19 की जब हम बात करते हैं तो जो चेयरमैन PCB हैं रमीज़ हसन राजा, और 1981 में पाकिस्तान के अंडर 19 टीम के कप्तान थे, और यहीं लाहौर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की कप्तानी भी की थी. चलिए, ये बहुत पुराना आपने स्टार्ट दिया है, इस पे वापस आते हैं. ज़ैनब इज रेडी टू अनाउंस द नेक्स्ट नेम. हैदराबाद हंटर्स ने अपनी पिक कर ली है, and if you could have the name. Right, James Rosswood, he's a spinning all-rounder, spin all-rounder है, opening भी करते हैं, opening batter from England. James Rosswood, you are part of PJL now, so many congratulations to you. चले, before the next round, obviously अगले round पर हम जाएंगे. If we can go back to the studio guys to tell you more about whatever we've picked so far. Yes, so you're talking about which Royals? Bahawalpur Royals. Stop testing me, Sikandar. I will get it right before the end of today. लेकिन हम इमरान ताहिर के अंडर 19 करियर के बारे में बात कर रहे थे, और उनके अलावा भी जो मेंटोर्स हैं, they have all had a playing career at the under 19 level. तो कितना एक्साइटिंग होगा, खास तौर पे सर विवियन रिचर्ड्स. एक मैसिव जनरेशनल गैप है बिटवीन हिम एंड दीज प्लेयर्स. तो किस तरह से वो उनको मेंटोर करेंगे, यू नो, विद हिज रिच एक्सपीरियंस एंड रिच हिस्ट्री. लेकिन जिस तरह हमने PSL में देखा, तो वो जो जनरेशन गैप हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया कि वो 19-20 साल के प्लेयर्स भी वैसे ही उनके साथ कंफर्टेबल थे. तो यकीनन जब वो विव रिचर्ड यहाँ पर आएंगे, जावेद मियादाद यहाँ पर होंगे, तो इन लड़कों के लिए तो ये समझिए कि जैसे इनकी लॉटरी जो है वो आज निकल आई है कि क्रिकेट तो वो खेलेंगे, लेकिन जो वो एक्सपीरियंस मिलेगा, और यकीनन हमें इस पहली लीग से ही वो स्टार्स मिलना शुरू हो जाएंगे जो माजी में हमें अंडर 19 से मिला करते थे. इसमें शोएब मलिक, अब्दुल रज़ाक, इमरान ताहिर, बड़ी लंबी लिस्ट है. नो डाउट. सिकंदर, हु वाज योर cricketing hero back when you were 19? When I was 19? Yeah, when you were in that age group. Tough question. Sikandar. Good save, Sikandar. No, I'm serious. Because you took me back to my 90. That was a long that was a safe answer. So you skipped a lot of players who probably I like, but they were not there when I was 19. So Sikandar Bakht liked Sikandar Bakht when he was 19. Right now, Zainab is ready to announce the next name. We will join you guys shortly. He's still 19, Roha. That's what I think. अच्छा जी, next round की तरफ चलते हैं, which is Rawalpindi. Rawalpindi जी, कितने आप तैयार हैं? Rawalpindi Raiders, your time starts now.
Right, we have the name Amir Hassan, left arm medium fast bowler. Again, domestic में हम इनको देख चुके हुए हैं, बहुत बहुत इनको मुबारक हो. और मैं ये बताती चलूँ कि all other teams apart from Gavadir have to pick one more foreign player. लाजमी है because गवादर ने तो अपनी काफ़ी ज़्यादा पिक्स करनी है, लेकिन बाकी टीम्स को अब अपने foreign player डिपार्टमेंट को फिल करना होगा. So if we can please move on to the next one. Next team, गुजरावाला Giants. आपका टाइम शुरू होता है अब. Right, discussion चल रही है. जैसे कि मैंने बताया, अगले 2 राउंड्स में we'll be seeing more foreign names because गवादर की तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उन्होंने काफ़ी फिल कर ली है, लेकिन बाकी जो टीम्स हैं they still have an opportunity to have some foreign players involved because local players उनकी teams में already काफ़ी हो गए हैं, and as you know उनकी involvement उतनी ही necessary है in PJL. Right, we have the name for Gujranwala Giants. Left-handed batsman, opening batter है ये. Sri Lanka under 19 के लिए खेलते हैं. Shevan Daniel. Shevan Daniel, many congratulations. If you are watching this draft, you are the lucky one to be playing PJL. मर्दान, आपका टाइम शुरू होता है अब. मर्दान ऑलरेडी डिस्कशन में बहुत मुब्तला है और बहुत कीनली लैपटॉप को देखा जा रहा है, डिस्कशन हो रही है साथ साथ. डिस्कशन अभी तक जारी है मर्दान की. All right, time is up. Do we have the name? Still waiting on the name. All right, Ollie Cox, Worcestershire से इनका ताल्लुक है, इंग्लैंड से ताल्लुक है, and left-handed batsman है और मर्दान में अब feature करेंगे. Finally, they have picked a foreign player in their side, and actually they've got 2, 3. वो तो हाँ जी बिल्कुल. Right, if we could now move towards Bahawalpur Royals. आपका टाइम शुरू होता है अब. All right, टाइम जो है वो ख़त्म हो गया. If you could have the name please. Central Punjab under 19s के अली रज़ाक, right-handed batsman, right arm medium fast bowler. Bahawalpur Royals Central Punjab के प्लेयर को सिलेक्ट कर चुके हैं
And well done. And now let's move on to Gwadar Sharks. आपका time शुरू होता है अब. There is a lesser time limit in this round, as you all know. 45 seconds. पहले 60 थे, अब इस round में 45 हैं, और X Factor round में और भी कम हो जाएंगे. So let's see who they pick. Is it going to be another foreign player or is it going to be a local player? Discussion चल रही है यहाँ पे. Right, we are ready with the name. Northern under 19 के साद मसूद, right-handed batsman. बहुत आपको मुबारक हो. You will be featuring in PJL, and hopefully you get to perform and everybody gets to know more about you. चलें जी, हैदराबाद, आपकी बारी आ गई है. Hyderabad Hunters, the men in green, sitting there. Discussions जारी हैं. अब्दुल रज़ाक साहब अपनी input दे रहे हैं गुलाम अली साहब को. So let's see कि क्या. हाँ जी, टाइमर. अच्छा जी, वे थम्स अप मिल गया है मुझे. इसका मतलब है नाम अनाउंस होने वाला है बहुत जल्दी. As soon as we get the name, but it seems like kind of already knew who they are picking. Still waiting on the name from Hyderabad Hunters. Their time is up. अच्छा जी. चलें, जब तक यहाँ पे फाइनलाइजेशन हो रही है, चलते हैं वापस स्टूडियो में. Just get that feeling that now the coaches and the other guys, mentors, are just getting a hang of it. कि जिस तरह टीम बनती जा रही है, और I'm sure उनके दिमाग में और जहन में काफ़ी प्लेयर्स होंगे जो उनको नहीं मिलते, किसी और को मिल जाते हैं. So rapidly they have to think of plan B. लेकिन अभी तक जो फॉर्मेशन है, I think फरहान सबसे ज़्यादा बता सकते हैं कि किसका पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है या अच्छा लग रहा है अभी तक का. देखिए, अभी फॉरेन प्लेयर क्योंकि हमने उनको इतना खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन जब हम पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करते हैं तो हैदराबाद और जो रावलपिंडी है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उनके पास ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं कि जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है डोमेस्टिक क्रिकेट में या अंडर 19 में अभी तक जो वो खेलते हुए आए हैं. तो इसका मतलब हैदराबाद और रावलपिंडी, अगर मैं इनके मेंटोर्स को देखूं तो डैरन सैमी हैदराबाद हंटर्स के हैं, रावलपिंडी की कॉरल मनरो हैं. दोनों यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आई थिंक उनके साथ फ़ोन पे बात हो रही होगी. लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ी अच्छी तरह पहचानते हैं, और आई थिंक बड़ी बारीकी से उन्होंने प्लेयर्स को फॉलो किया हुआ, और अगर नहीं भी किया हुआ तो जो कप्तान उन्होंने अनाउंस किया वो उनके साथ बैठे हुए हैं. बिल्कुल, और आई थिंक नेक्स्ट सीजन के लिए भी हमारे पास अब तब तक और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इन प्लेयर्स के बारे में. वी विल गेट टू सी देम परफॉर्म ऑफ कोर्स, एंड वी विल हैव द नंबर्स ऑन देम, एंड ऑफ कोर्स दोज थिंग्स दैट कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन नंबर्स, वी विल बी एबल टू विजुअली सी दोज प्लेयर्स. और जाहिर है ये हमारे कुछ फेवरेट्स बन जाएंगे, कुछ स्टार्स बन जाएंगे. इनमें से काफ़ी ऐसे प्लेयर्स होंगे जो हाउस होल्ड नेम्स बनेंगे सिकंदर, एंड दैट्स आई थिंक द ब्यूटी ऑफ PJL के इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू कैन रीड ऑफ अ पेपर, क्योंकि ऑन पेपर तो आप किसी भी टूर्नामेंट से पहले जो है वो उसी हद तक आप कर सकते हो, बट ऑन द गिवन डे यू नेवर नो. भी आपने हैदराबाद के बारे में बात की, बट ऑल दीज टीम्स यू नो ऑन द गिवन डे वी नेवर नो, एंड आई थिंक वी कांट वेट फॉर दैट एक्साइटमेंट. राइट? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये जो सिलेक्शन हुई है इनकी 1 डे और 3 डे से हुई है, और इन्होंने खेलना T20 है, तो
उस दिन पता चलेगा जब ये 6 अक्टूबर को लीग स्टार्ट होगी, तो तब हम अंदाज़ा कर सकेंगे कि कौन सी टीम कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। अभी तक जो इनकी पास की परफॉर्मेंसेस है उसकी बेस पर जो मैंने बात की है वो है, लेकिन जब टाइम आएगा जब लीग शुरू होगी तो फिर ही सही अंदाज़ा होगा कि कौन सी टीम कितनी ज़्यादा पावरफुल है। बिल्कुल बिल्कुल, अगले ड्राफ्ट तक जो है वो आई थिंक अच्छा खासा डेटा हमारे पास आया होगा, और आई थिंक जितना टाइम आज लग रहा है ना दुगना टाइम लगेगा, बिकॉज एवरीवन विल बी ऑलरेडी familiar with these names, and फरहान ऑलरेडी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, यू नो सारे नंबर्स शेयर कर रहे हैं कहाँ से ये लोग खेले हैं। एंड ज़ाहिर है जौन से प्लेयर्स एलीट कैटेगरी में से रह गए थे, नाउ दे हैव बीन रेलीगेटेड टू द प्रीमियर कैटेगरी, तो उनके पास भी बार बार मौका है टू गेट पिक्ड। ऐसा नहीं है कि अगर एक प्लेयर एलीट कैटेगरी का पिक नहीं हुआ तो फिर वो कम्प्लीटली आउट ऑफ रिटेंशन है फॉर। और प्लेयर्स का जो पोल है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब वो एलीट से प्रीमियर में आ रहे हैं, जब हम एक्स फैक्टर में जाएंगे तो शायद और ज़्यादा टाइम लगे, कोचेस को और ज़्यादा टाइम वो लेंगे सबसे अच्छा प्लेयर अपनी टीम के लिए रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक्स फैक्टर की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। आई विल रिमाइंड यू ऑल अगेन कि जो एक्स फैक्टर के प्लेयर्स हैं वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने एसोसिएट टीम से जिनका ताल्लुक है, एसोसिएट मेंबर बोर्ड्स जो हैं, तो दे हैवंट गॉटन इतना एक्सपोजर कंपेयर टू द प्लेयर्स इन द प्रीमियर कैटेगरी एंड द लीड कैटेगरी, लेकिन इसीलिए उनका नाम जो है वो एक्स फैक्टर है, बिकॉज यू कांट पुट अ टाइटल और अ लेबल ऑन देम येट, यू नेवर नो व्हाट्स इन स्टोर for us, so we're all very excited to see how that category unpacks. So a lot of action जो है वो रहता है देखने वाला। अभी चलते हैं वापस ज़ैनब की तरफ। ठीक है जी, हैदराबाद हंटर्स ने अपनी पिक कर ली है, लहीरो दवतागे, quite an interesting obviously wicket keeper batter है, श्रीलंका से इनका ताल्लुक है। लहीरू, many congratulations to you. So एक फॉरेन पिक हो चुकी हुई इनकी। चले जी, this was the end of the round, so it's back to you guys. चले जी, Hyderabad Hunters once again back in action for the next round. We'll be back with the studio guys just in a bit, but आपका टाइम शुरू होता है प्रीमियर कैटेगरी में अब। अच्छा जी, डीप डिस्कशन चल रही है हैदराबाद हंटर्स की। We are waiting on them to tell us who their pick is. And do we have a name? We don't. Deliberations are still going on. They're still thinking about it. Obviously, बहुत important decisions हैं. Composing a team, composing a good side, that is always crucial. बहुत सीरियस डिस्कशन चल रही है यहाँ पे। चले जी, अरबाज खान साहब, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, हैदराबाद हंटर्स से इनका ताल्लुक है। और अब हम जाते हैं गवादर की तरफ। गवादर, आपका टाइम शुरू होता है अब।
जी गवादर आपका टाइम जो है वो खत्म हो गया है. Right, we have a name, Shumail Hussain. Shumail Hussain. Shumail Hussain, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. नॉर्दर्न अंडर 19 से इनका ताल्लुक है. लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है Shumail. Many many congratulations to you. चलें जी बहावलपुर, आपकी बारी आ गई है और आपका टाइम शुरू होता है अब. राइट पिक कर लिया है उन्होंने नंगयालिया खरातोय, स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर फ्रॉम अफगानिस्तान, plays for the under 19 अफगानिस्तान साइड. सो many many congratulations to you. अब आप PJL में फीचर करेंगे. अगली बारी है मर्दान की. मर्दान, आपका टाइम शुरू होता है अब. Right, we have the name with us. Mardan Warriors has picked Mohammed Farooq, who's a right-handed batsman from Khyber Pakhtunkhwa. बहुत बहुत आपको मुबारक हो मोहम्मद फारूक साहब. Thank you so much for being a part of PJL. ठीक है जी, अब चलते हैं towards गुजरावाला. गुजरावाला, are you ready? Your time starts now. चलें जी, डिस्कशन चल रही है यहाँ पे, so if we can go back to Sikandar and Roha. Thank you, Zainab. Here we are. Now we're talking about, of course, the PJL and the formation of the teams, and I've got Mr. Nadeem Khan. He's the project director, PJL, that's Pakistan Junior League. He's also director, High Performance Pakistan Cricket Board. Thank you for joining us, sir. From a cricketer's point of view, a former cricketer's point of view, हम देखते हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे हमने रमीज राजा साहब से भी बात की, जावेद मियादाद से भी बात की, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट से भी काफ़ी मुंसलिक रहे हैं.
आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स भी पता हैं। मैं पहले बोलता था कि यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमारी एज में T20 में इतना पैसा होता है, अगर हम खेल रहे होते तो कितना मज़ा आता। अब बच्चों को भी मिलेगा पैसा। इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स नाइस थिंग, क्योंकि एक मोटिवेशन है, एक जैसे एक अवार्ड मोटिवेशन होती है, और इससे ना सिर्फ क्रिकेट गियर भी अब सस्ता नहीं है, तो इट हेल्प्स इन एवरी वे। आप कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान जूनियर लीग को, हमारे जो डोमेस्टिक लेवल या अंडर 19 लेवल क्रिकेट को एक तो एक बहुत बड़ा बूस्ट भी मिलेगा और आगे जाने में भी सिलेक्शन में आसानी होगी? देखिए, एक चीज़ सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्रिकेट उन चंद गेमों में से जिसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं। क्रिकेट है, इसमें 3 फॉर्मेट्स है, T20 है, वनडे है, और आपको पता है टेस्ट क्रिकेट। नदीम साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक पिक रेडी होगी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। लेट्स जॉइन ज़ैनब क्विकली। ब्रेक नहीं होगी किसी गुजरात जायंट्स ने पिक किया है मोहम्मद शान को, राइट आर्म मीडियम फास्ट। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। ठीक है, पिंडी की जो है पिक का टाइम आ गया। रावलपिंडी रॉयल्स, दिस इज द लास्ट पिक ऑफ द राउंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ऑल्सो ऑफ द कैटेगरी एज वेल। सो प्रीमियर कैटेगरी चल रही थी, ये लास्ट पिक है। राइट, वी रेडी विद द नेम। अफगानिस्तान से इनका ताल्लुक है। अल्लाह मोहम्मद मुजफ्फर, ऑफ स्पिन रीजनल क्रिकेट खेलते हैं अफगानिस्तान में, ऑफ स्पिन बॉलर हैं, ऑपरेट कराते हैं, और अब आपको नजर आएंगे PJL में। राइट, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द राउंड एंड इट्स बैक टू यू गाइस इन द स्टूडियो। थैंक यू सो मच ज़ैनब। बात कर रहा हूँ मैं नदीम खान साहब से। एक बार फिर आपको बता दूं कि पाकिस्तान जूनियर लीग जो है इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। तो आप बता रहे थे मुझे कि किस तरह से ये बेनिफिट करेगा अंडर 19 सर्किट को भी और फिर इन प्लेयर्स को आगे जाने में। जैसे मैं बताया था कि 3 फॉर्मेट है क्रिकेट के अंदर, और पाकिस्तान टीम तीनों फॉर्मेट्स में खेलती है, तो आपको मजबूत पाकिस्तान टीम चाहिए तीनों फॉर्मेट्स के लिए। इस लीग से ये होगा कि हम अर्ली एज में आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन से बच्चे जो है हमारी T20 की तरफ जाएंगे। इसके अलावा हम आपको पता है जैसे अंडर 19 का हम 3 डे भी कराते हैं और 1 डे भी कराते हैं, तो तीनों फॉर्मेट हम बच्चों को खिलाना चाह रहे हैं। असल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बच्चों के लिए, वो इस लीग के अंदर एक्सपोजर होगा। फॉरेन प्लेयर के साथ खेलना, फॉरेन कोचेज़, पाकिस्तान के टॉप कोचेज़, उनके मेंटोर्स, और फिर जो जिस तरह से ये स्टेज बन रहा है, जो एक्सपोजर मिलेगा मेरे ख्याल से इन बच्चों को, वो इनकी ग्रोथ में बहुत फ़ायदा देगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है ग्रास रूट्स क्रिकेट में, जूनियर क्रिकेट में। अगर आप देखेंगे अभी हमने 100 का प्रोग्राम भी शुरू किया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसे दुनिया की कोई भी मजबूत टीम हो, उसकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होती है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत हो। इन बच्चों को हम अर्ली एज में एक्सपोजर देंगे और इंशाल्लाह इनकी जो ग्रोथ होगी उससे पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होगी। खुशकिस्मती से, और ज़ाहिरी बात है उसमें मेहनत बहुत शामिल है, प्लेयर्स की भी और स्टाफ की भी। आजकल पाकिस्तान की फेवर में रिजल्ट्स हैं, और लास्ट 1 ईयर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। लेकिन अगर इस परफॉर्मेंस को हमने कंटिन्यू रखना है तो आपको बेंच स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जहाँ से बच्चों को अर्ली एज में एक्सपोजर मिले और हमारी बेंच स्ट्रेंथ मिले। अच्छा, एक्सपोजर की आपने बात की, लेकिन एक्सपोजर नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंसिस्टेंटली चांस भी उनको मिलता रहे ऐसे प्लेटफॉर्म्स में। अगर हम एग्जांपल लें हारिस रऊफ की, तो उन्होंने अपने इंटरनेशनल डेब्यू से पहले ही वो दुनिया में एक नाम बन चुके थे। ऑफ कोर्स ही प्लेड इन द BBL, तो उनको एक एक्सपीरियंस वहाँ से मिला था। तो यहाँ पे अगर जो स्टार परफॉर्मर्स होते हैं, क्या उनको भी इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो दुनिया में बाकी लीग्स में पार्टिसिपेट करें, अपनी गेम को बेहतर करें? देखिए, आपने देखा होगा पिछले चंद सालों में हमारे काफ़ी अंडर 19 बच्चे जो है मुख्तलिफ लीग्स में खेल रहे हैं। स्पेशली मैं शुक्रगुजार हूँ PSL फ्रेंचाइजीज़ का भी कि उन्होंने भी चांस दिया हमारे अंडर 19 प्लेयर्स को। और अगर आप ये देखेंगे, इवन इन डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है। आप ने देखा होगा कि अंडर 19 से लास्ट 2 साल में तकरीबन 40 बच्चे इंडक्ट हुए हमारी जो
provincial teams in Canada. Chale, all the best to you Thank for you. the first season of the PJL and thank you so much for joining us in the studio. अब time हुआ है एक और break का because we still have some picks to go. तो X Factor जो है वो अब शुरू हो रही है. We're all very excited. I am very, very excited for this round especially. So we will be back from the break shortly and dive straight into the X Factor category. Don't go anywhere.
Hello and welcome once again. We are talking about the draft of PJL, that's Pakistan Junior League. Rohan Nadeem alongside me. Rohan, we have done with elite category and we also sorted out with the premier category. अब है X Factor कैटेगरी की बारी है जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे उनको जो एसोसिएट मेंबर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, वो प्लेयर्स जिनके एसोसिएट कंट्री से ताल्लुक़ है. ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है और इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि 250 से ज़्यादा प्लेयर्स और एंट्रीज़ हैं लोकल की, 170 प्लस हैं फॉरेन कैटेगरीज़ की. तो ये है 6 राउंड्स हैं और इसमें प्लेयर्स जो फीचर करेंगे वो एसोसिएट मेंबर बोर्ड्स, वाइल्ड कार्ड, नेशनल एंड रीजनल अंडर 19 के वो प्लेयर्स होंगे. ओवरसीज़ प्लेयर्स मैक्सिमम 2 और मिनिमम अगर आप चाहें तो ना ही करें. लोकल प्लेयर्स में भी मैक्सिमम 6 और मिनिमम में 4 होना ज़रूरी है. तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. टोटल 36 विल बी selected in this category. Yeah, and सिकंदर वाइल्ड कार्ड जो है ये एक बहुत important aspect है इस category का because this essentially means that you can pick any player out of this current pool of players. So you're free to do that and that's such an exciting option to have क्योंकि कोई भी player आप pick कर सकते हैं, एक mystery element आप add कर सकते हैं to keep the rest of the teams on their toes. फिलहाल Zainab is on her toes right now. She's ready to announce the start of the X Factor round. So Zainab, take it away. अच्छा जी, X Factor category में हम आ गए हैं. अब आप लोग सब बैठ जाएं because we've now moved to the next category, which is the X Factor category and also the last category of the day. सबसे पहली पिक जाती है गुजरावाला को. गुजरावाला Giants सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, डिस्कशन चल रही है. आपका टाइम शुरू होता है अब and it's going to be 45 seconds in which you can make that choice of X Factor picks. जैसे कि हमने आपको बताया था 3 कैटेगरीज हैं, एलीट है, प्रीमियर है और X Factor है. And now we have moved on towards X Factor category. Right. Right, we have the name. It is Mohammed Farooq, right-handed batsman है और गुजरावाला Giants में फीचर करेंगे. तो बहुत आपको मुबारक हो मोहम्मद फरूक. Moving on to Mardan, are you ready? आपका टाइम शुरू होता है अब. Right, name in. Another Mohammad Irfan in the house. And Mardan Warriors ने select किया है मोहम्मद इरफान को. और I think मोहम्मद इरफान crowd में मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं. He is standing up as well. If we can please show him on screen. बहुत आपको मुबारक हो मोहम्मद इरफान साहब. मैं सोच रही थी कि बहुत तालियों की आवाज़ें आ रही हैं, तो ये कहाँ से आ रही हैं? So congratulations to you as you'll be part of PJL and I wish you a lot of success on this journey. Right, it's time for Hyderabad. आपका टाइम शुरू होता है अब. Hyderabad Hunters जिसमें के गुलाम अली हैं, अब्दुल रज़ाक हैं और उन्होंने already मुझे thumbs up दिखा दिया है. He's already with it, he's ahead of the game, he's already decided who he wants. So Hyderabad Hunters, they've already decided. Once we get the name, we shall reveal it to you.
Right, can we have the name please? We have the name, they have decided who they want. Mohammed Zubair Jr. स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है. सो मोहम्मद ज़ुबैर, बहुत बहुत आपको मुबारक हो. रावलपिंडी आपकी तरफ चलते हैं. रावलपिंडी रेडर्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 45 seconds इनके पास है रावलपिंडी रेडर्स के पास to select their player from the X Factor category. X Factor category में वो players हैं जो कि associate member boards का हिस्सा रह चुके हैं, जिनको आप देखते हैं वहाँ पे. They now have an opportunity to harness their skills and play Pakistan Junior League. जी पिंडी रेडर्स, योर टाइम इज अप. अ फ्यू हैंड्स रेज्ड, कुछ चल रहा है यहाँ पे. अच्छा जी, जहाँ पे ये डिस्कशन चल रही है रावलपिंडी रेडर्स की, can we please head back to the studio because we are there with a very, very special guest. Thanks, Zainab. A very special guest indeed. We have Shoaib Malik with us, the mentor for Gujarat Giants. Shoaib, welcome to the studio. How are you feeling today being a part of this, the very start of the Pakistan Junior League? Well, I feel honored and I guess I'm getting this opportunity to share my experience with youngsters, what I've seen in my life. You yourself are a youngster very much, by the way. Thank you for such great words, but trust me, you're not in my shoes. I guess, yes, till the time you're playing. Yeah. And you got to train hard. And you should ask a question to yourself, are you still fit enough, are you still good enough to represent any team you're playing for? So I guess I'm still enjoying it, and I'm still taking those hot spots in fielding positions, and captain's not trying to hide me in the field. So that's actually bothers me. And no, I think we're all loving the... If that starts going to happen, then I wouldn't be playing. I don't think that will happen anytime soon. We will come back to Mr. Shoaib Malik, but right now Zainab is ready with the next pick. Right, Rawalpindi Raiders ने select किया है ज़ियाउल्लाह को. Slow left arm orthodox spinner है और we'll definitely be seeing him in action. So congratulations to Ziaullah. Time for Bahawalpur Royals. Discussions already इनकी जारी है. Your time starts now. Right. Discussion, deep discussion यहाँ पे जारी है, and they seem to be pretty certain on who they want. They still got 30 seconds to decide who they want. X Factor category की picks इस वक्त जारी हैं. Bahawalpur Royals. Right, time is up. Bahawalpur. Decide कर लिया है आपने. The name is in. If you can please have the name on the screen. फरहान यूसुफ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. You will be featuring in Bahawalpur Royals. PJL का हिस्सा होंगे. And it's back to you guys in the studio after Gawadar Sharks actually decides who they want. So Gawadar Sharks, आप तैयार हैं?
आपका टाइम शुरू होता है अब। Okay, here we are. While they're deciding, talk to Shoaib Malik. Shoaib, you've been in the cricket circuit for a long time. हम बात करते हैं under 19 भी आपको याद होगा. So you understand the cricketers' needs as well इस age की. Of course, वो cricket gear, equipment भी हो सकती है. Finances are very important. And then that jump that the player expects कि मैं कब खेलूँगा national side के लिए. ये कैसा bridge create करेगा जो PJL है इस चीज़ में? I think PJL ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो हमने दुनिया भर में नहीं देखा है और ये फर्स्ट टाइम है that somebody is introducing this league formation of playing under 19 की league. Yeah. So I guess it's a great platform. इसमें मुझे ये लगता है कि हमारी क्रिकेट में this element was missing to gain that exposure. उसके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो कि I must give credit to रमीज भाई कि उनको ये थॉट आया कि यार ऐसी चीज़ कोई होनी चाहिए क्योंकि एक्सपोजर एक ऐसी चीज़ है। हमारा जो लड़का था उसको पाकिस्तान टीम में जाके मिलता था या PSL जब से शुरू हुआ था तब उसको मिलना शुरू हुआ। तो आई गेस अंडर 19 इज़ द राइट एज। ऑल्सो बहुत सारे जो हमारे एथलीट्स हैं वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जहाँ पे आइदर आप पढ़ सकते हो या आप खेल सकते हो या आपको कुछ पैसे घर में कमा के देना है। तो आई गेस सारे एलिमेंट्स जो है वो टिक करते हैं ये एक पर्टिकुलर लीग। अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्रिकेटर का। मुझे ऐसा फील होता है कि ये PJL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस प्लेयर को, इस एज के प्लेयर को डीप एंड पे थ्रो कर देगा क्योंकि आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स तो होती हैं लेकिन वो टेस्ट होती हैं जब आप टीवी पे आ रहे होते हैं, जब क्राउड मौजूद होता है, वो आपकी मेंटल टफनेस वहाँ नजर आती है। तो अगर इस एज पे वो चीज़ एब्जॉर्ब कर पाए प्लेयर तो फिर जो हाईएस्ट लेवल पे आएगा तो आई थिंक वो एट बे और एट सी फील नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा और ऑल्सो ये उनको अलाउ करेगा बिकॉज उनकी पॉकेट्स में पैसे होंगे, ये उनको अलाउ करेगा कि अवेयरनेस लेनी है कि यार मैंने मैच से पहले क्या खाना है, मैंने मैच के बाद रिकवरी के लिए क्या खाना है, अगले मैच के लिए रेडी होने के लिए। दूसरा ये है कि हमारा वो ऐसा कल्चर है कि जो कमाने वाला हो उसकी चलती है सब जगह। वो तो है। तो मैं आपके पास आता हूँ, सॉरी, खाने की बात ही आप कुछ खाएंगे? मैंने नहीं, कुछ नहीं खाएंगे। मेरा पेट फुल है। ठीक है, ज़ैनब के पास चलते हैं और वापस आएंगे एंड विल कंटिन्यू विद शोएब। इसीलिए शोएब इतने पतले भी हैं, ज़्यादा खाते पीते नहीं हैं। अच्छा, गवादा शार्क्स, कैन वी हैव द नेम? मोमिन कमर, ही इज एक्चुअली अ लेफ्ट आर्म चाइनामैन। गलत लिखा हुआ है आरएसबी, इज एक्चुअली अ लेफ्ट आर्म चाइनामैन। मोमिन कमर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो बिकॉज यू विल बी फीचरिंग इन द PJL। जी, अच्छा जी, भावलपुर, आपका टाइम शुरू होता है अब। प्लीज डिसाइड आपको कौन चाहिए आपकी टीम कॉम्पोजिशन के मुताबिक। योर टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। Thank you, Zainab. You are indecisive. You want to come here, you don't want to come here. We're talking to Shoaib. I think she wants to come here. जी? I think she wants to come here. She wants to come here, yeah. Well, बात कर रहे थे हम. You were telling me about how he needs to carry his body, of course, physical and mental toughness of the player at that age. बिल्कुल, उसमें I guess देखें, nobody is perfect. और कोई ये बोले कि यार मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मुझे शुरू से सारी चीज़ें पता थी। मुझे भी बहुत टाइम लगा एंड आई एम श्योर जिनको ये सारी अवेयरनेस है या जिन्होंने सीखा है ओवर द इयर्स तो उनको भी टाइम लगा होगा। बट हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। हम लोग ज़रूर अंडर 19 खेले हैं बट थिंग्स वर डिफरेंट एट दैट पॉइंट। लेकिन आज की ये नीड है टू स्टे कंसिस्टेंट इन योर प्रोफेशन, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्किल पे काम नहीं चाहिए, उसके लिए आपकी प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा आपको चाहिए आपके लाइफस्टाइल में। तो आई गेस किस तरह की लाइफस्टाइल चेंजेस आपको लगता है रिक्वायरमेंट है आज की? आजकल की ये है कि आपको सबसे पहले अपने कल्चर के साथ फाइट करना है क्योंकि अगर मेरे 10 दोस्त हैं। हाँ जी, चलें, वी विल कम बैक टू दैट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पॉइंट छिड़ गया है बट ज़ैनब इज रेडी विद द नेक्स्ट नेम, सो लेट्स गो बैक टू हर। राइट, भावलपुर रॉयल्स, वी हैव द नेम फॉर देम। सेंट्रल पंजाब के मोहम्मद तैयब आरिफ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगेन बहुत तालियां आई हैं and he's here amongst us. So Mohammed, thank you so much for joining and all the best. I'm sure you're going to be a star one day for the Pakistan cricket team. Rawalpindi,
Are you ready? आपका टाइम शुरू होता है अब. राइट, रावलपिंडी रेडर्स जो हैं इस वक्त डिस्कशन चल रही है यहाँ पे. डिस्कशन चल रही है रावलपिंडी रेडर्स की, बट आई थिंक दे नो हु दे आर गेटिंग. स्माइल्स ऑन देयर फेसेस. 5 सेकंड बाकी है रावलपिंडी रेडर्स के लिए. कैटेगरी एक्स फैक्टर राउंड 2 एंड वी हैव अ नेम. उस्मान खान रावलपिंडी रेडर्स के लिए राइट आर्म मीडियम फास्ट. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. You are in the X Factor category and you'll be featuring in PJL. So huge congratulations to you. Right, Gujranwala, are you ready? Gujranwala Giants यहाँ पे मौजूद हैं. उनके mentor जो हैं, he's in the studio giving us all the insight he can. And यहाँ पे they are taking key decisions. The timer has started. 45 seconds. Your timer starts now. आपस में डिस्कशन जारी है गुजरावाला जायंट्स की. ठीक है जी, नाम हमारे पास आ गया है. जल्दी जल्दी डिसीजंस हो रही हैं. टीम्स आर गेटिंग अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट दे हैव. एंड वी गॉट हसन अली जूनियर. वी ऑलरेडी गॉट वन हसन अली द साइड. नाउ वी हैव अनदर हसन अली जूनियर. राइट, मुबारक हो हसन अली जूनियर, आपको बहुत बहुत. किसकी बारी है जी? गवादर, आपका टाइम शुरू होता है अब. एक्स फैक्टर कैटेगरी राउंड 2 में इस वक्त हम मौजूद हैं. छह सेकंड बाकी हैं गवादर शार्क्स के. डू वी हैव द नेम? लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम. कैन वी हैव द नेम? मोहम्मद अबू बकर. बहुत बहुत आपको मुबारक हो. ही इज नॉट हियर बिकॉज नॉर्मली जब वो यहाँ पे होते हैं तो यहाँ के जो बॉयज हैं उनमें वो खड़े हो जाते हैं. बट ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद Abu Bakar. And now it's time for Hyderabad to get in action. Hyderabad, are you ready? आपका टाइम शुरू होता है अब. मैं आपके थम्स अप का वेट कर रही हूँ रजाक साहब. डिसाइडेड? वाह भाई, बड़ी जल्दी क्विक डिसीजन मेकिंग हो रही है हैदराबाद की. आई हैव टू से कि जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है फटाफट उनका थम्स अप आ जाता है. चलें जी, 45 सेकंड्स थे लेकिन इन्होंने कोई 25 सेकंड्स में ही डिसाइड कर लिया. दे वेरी श्योर ऑफ हु दे वांट. दे हैव गॉट द टीम कंपोजिशन राइट. लेट्स हैव अ लुक एट हु वी हैव. नेम रिवील प्लीज. मोइज राणा. मोइज राणा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. आप यहाँ पे मौजूद नहीं हैं लेकिन अगर आप देख रहे हैं ये कवरेज तो ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू यू. राइट, मर्दान आपकी बारी आ गई है. मर्दान किधर है? मर्दान इधर हैं. मर्दान, आपका टाइम शुरू होता है अब.
Right, we have a name for Mardan Warriors in the X Factor category, round 2. Amal Khan. Amal Khan, बहुत बहुत आपको मुबारक हो. राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और जहां भी देख रहे हैं, जहां भी सुन रहे हैं, ह्यूज कंग्रेचुलेशंस. चले जी, वापस चलते हैं स्टूडियो की तरफ और वहां पे जाके कुछ बातें करते हैं. Thank you, Zainab. We were in conversation with Shoaib Malik, the mentor for Gujarat Giants. अभी आप हमें बता रहे थे about lifestyle changes. So continue that thought. थोड़ा सा ये है कि अगर मेरे एक 10 दोस्त हैं तो वो 10 डिफरेंट खाने खाते हैं, फिर डिफरेंट जगहों पे जाते हैं. ठीक है, तो उसमें यह है कि उनको आपको एजुकेट करना है बेसिकली, क्योंकि हमारा कल्चर है वो नाराज़ हो जाते हैं, यार मेरी बात नहीं मान रहा, मेरी बात नहीं मान रहा. तो पहले आप उनको वो थोड़ा सा अवेयरनेस उनको भी दें, यार देखो ये मेरे लिए सही नहीं है. बाउंड्री क्रिएट करें. बाउंड्री देखें, अगर आपने कुछ अचीव करना है लाइफ में तो आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं जो आपको पसंद है. तो मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि आपको अपने लिए गोल सेट करें और उसको अचीव करने के लिए आप मेक श्योर करें कि यार मैं ये ट्रैक से नहीं हटूंगा टिल द टाइम आई एम प्लेइंग दिस प्रोफेशन. और आपके सामने रिजल्ट है इस पूरी आइडियोलॉजी का. इससे बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली जब से मैंने शुगर इनटेक 0 किया है, मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है. जबरदस्त. और we'll take it from here shortly. शोएब, अभी वापस जाते हैं ज़ैनब की तरफ क्योंकि मर्दान has picked their name. जी मर्दान वॉरियर्स, आपका टाइम शुरू होता है अब. 45 seconds to have your next pick ready. राइट, यहाँ पे डिस्कशन चल रही है मर्दान वॉरियर्स की. आई थिंक दे स्टिल काइंड ऑफ डिसाइडिंग. नो, दे हैव डिसाइडेड. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग टू मी. ठीक है जी, कैन वी हैव द नेम ऑन द स्क्रीन प्लीज? ज़ुहैब खान शानज़ेब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर भी हैं. इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव समबडी हु हैज बोथ स्किल्स. They can bring that onto the table. Obviously, गवादर का टाइम स्टार्ट होने वाला है. गवादर, are you ready for your next pick? Your time? It's actually Hyderabad, not Gavadir. Hyderabad. Hyderabad Hunters have another 24 seconds to go, 22 seconds to make their choice. Acha ji, they're looking around for some help. Okay,
meanwhile, while they make their जो भी decision making यहाँ पे हो रही है, we can get back to the studio. So it's back to you guys. Who's obviously we've got Shoaib Malik there, Rohan and Sikandar as well. So over to them. Thank you, Zainab. And before we let Shoaib go and join his team, Gujarat Giants, I just would like to see the players who are being selected sitting outside, and I'll ask you that question. That nothing can describe that emotion. जो जिस चीज़ से गुजरते हैं. I'm sure the excitement, they're not trying to show it. या बाद में sink in होगा. Your call first time for the Pakistan colours, you must be knowing the feeling. What is it like for a player at that age to know that I am going to be part of something very first time? I think once they see their names in the squad, it's like a festival for them. But at the same time, it's an opportunity for them. कि आप उसको ठीक है, खुशी हो, हर सारी चीज़ें हो. देखें आप ये मुझे लग रहा है ये वो वाले प्लेयर्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि वी गेट पिक्ड और फिर आप देखें इनके फेसेस पे भी बहुत सारी वो स्माइल आएगी और खुश होंगे एंड आई एम श्योर दे विल गेट पिक्ड इंशाल्लाह सून. तो मुझे याद है मेरा जब फर्स्ट टाइम मेरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नाम आया था उस टाइम पे सेल फोन्स नहीं थे और उस टाइम पे सेल फोन्स नहीं थे और 9 o'clock वाली न्यूज़ जो थी वो हमारी मेन न्यूज़ थी पीटीवी पे. हाँ बिल्कुल. और मैंने विल्स कप का सेमीफाइनल खेला था कराची में, मैं पीआईए से खेल रहा था तो आई हैड दिस लिवरेज ऑफ गेटिंग फ्री टिकट्स फ्रॉम पीआईए. तो वो फ्लाइट ली मैंने सेमीफाइनल के बाद 7 o'clock वाली कराची से. 10 बजे वो लाहौर लैंड हुई, 9 o'clock अराउंड 9 o'clock. उसके बाद मैंने लारी अड्डे पे गया, वहाँ से जो भी बस जा रही थी वो मैंने ली सियालकोट के लिए और मैं जब घर पहुँचा तो अराउंड 1-2 का टाइम होगा रात के. तो सबसे पहले मेरे जो वालिद साहब थे वो मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि मेरा नाम आ चुका है, मुझे नहीं पता था. नो सेल फोन्स, नो मतलब कुछ भी आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते. तो वो उन्होंने भी न्यूज़ में सुना था. तो इस तरह that's how I came to know that I got selected for the national team for the first time. Amazing stories. We'll let you go and join your team, Gujarat Giants. Thank you for joining us. Thank you. Time for us to head back to Zainab. She's got another lucky name to be announced. Right, let's have the lucky name then. कौन है हमारे lucky name? सिंध under 19 सिंध का ताल्लुक है हसन इकबाल, हैदराबाद हंटर्स में शामिल हो गए हैं. बहुत बहुत आपको मुबारक हो हसन. Gavadir, we are once again ready. So if we could please have the timer for them. Your 45 seconds start now. Right, we're ready with the name, Gawada Sharks. Another fast bowler, Aftab Ahmed. बहुत बहुत आपको मुबारक हो. Gawada Sharks ने अपनी pace battery को strengthen किया है. And now we have Gujarat Giants. If we could please have your pick ready in another 45 seconds. Your timer starts now. Right, we have the name ready from Southern Punjab under 19. Mohammed Farooq, slow left arm bowler hai. He's very young.
only 15 years of age. Rawalpindi, please, क्या आप ready हैं for your next pick? Rawalpindi Raiders, your time starts now. Right, we have the name वहाज रियाज सामने खड़े हुए हैं बिल्कुल बहुत बहुत आपको मुबारक हो रावलपिंडी रेडर्स के लिए. He's also giving us a thumbs up. Obviously, it's a huge opportunity for him. Very similar to Wahab Riaz. Let's see कि उसी तरह के हैं कि नहीं. वहाज रियाज, अब वक्त आ गया है नेक्स्ट टीम का. Bahawalpur Royals, your time starts now. अच्छा, मुझे already thumbs up नजर आ रहे हैं. इसका मतलब है कि they've already sort of decided, made very quick in decision making. 45 seconds they have to make this choice. जी नाम आ गया हमारे पास. Can you have the name please? शावेज इरफान, बहावलपुर रॉयल से इनका ताल्लुक होगा. अब क्राउड में तो नहीं है, यहाँ पे नहीं बैठे हुए, लेकिन जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी देख रहे हैं, शावेज आपको बहुत बहुत मुबारक हो. इसी तरह हम देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा टीम कॉम्पोजिशंस बनती जा रही हैं. You know, lots of spinners, left arm spinners, leg spinners. And now we are ready with Gavadar. Gavadar Sharks, your time starts now. Right, Gavadar is still in discussion right now. They're still trying to make a decision, reach a decision. बहुत crucial discussions होती हैं ये, because at the end of the day, the team you decide now is the one that eventually goes on the field, takes the field. So, yeah, let's see कि क्या नाम end में आता है गवादर की तरफ से.
अभी तक डिस्कशंस जो हैं गवादर की जारी हैं. बाकी टीम्स आहिस्ता आहिस्ता they're shaping up nicely. There's foreign players involvement. अफगानिस्तान से प्लेयर्स नजर आए हैं, कैरिबियन, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स हैं जो कि नेशनल अंडर 19 टीम भी खेलते हैं. They're also featuring in this league. So I think it's a great initiative in the sense that ये कभी हुआ नहीं. Maybe it could set a precedent where we see more such leagues. So still waiting on Gavadar. चलें उतनी देर में जितनी देर में ये डिसाइड करते हैं, we can head back to the studio. All right. It's going to be me and her discussing now about the picks, and I'm going to ask her a few questions and push her into the deep end. Wow, okay then. I feel like I'm on the hot seat Yes. now. So if Am you I go- winning anything for these answers? I'm sure if you get the right answers, then you might just win something. Let's Talk see. about cricket. I mean, you played cricket to a certain level as well. You talk about how the youngsters are feeling at the moment. मैं जिस बात को काफ़ी बार डिस्कस कर रहा हूँ, ये सवाल का जवाब different mindset से लेना ज़रूरी है. Yeah. Whether I'm talking to Mr. Nadeem Khan or Ramiz Raja or Shoaib Malik, they've all Yeah. been there and playing cricket. What does it mean to be going home and telling your parents, listen, I got that many $1,000 because I have actually succeeded in what I always fought for, and that is play cricket. क्योंकि पहले कहा जाता था कि जी खेल तो लोगे, Yeah. लेकिन कमाओगे कैसे? कमाओगे कैसे? ये एक बड़ा pertinent सवाल है in the context of course Pakistan, and how you have to, at times if you're not privileged, you have to do your bit to make ends meet, especially if you're playing professional sport. So that struggle does not come easily to everyone. So I think ये जो आपने बात की है ना कि एक तो कमाने वाला, इसके ऊपर आज पूरे शो में, पूरे ड्राफ्ट में हमने काफ़ी दफ़ा टच किया है, the financial aspect. Of course, that is important, but I think at that age, I think for a young person to be picked for a platform like PJL, वो in itself एक इतनी बड़ी बात है, उसका एक इतना significance, उसकी एक symbolic इतनी significance है. तो I think for parents as well, ठीक है आप अपने बच्चों को encourage करें to earn something on the side. अभी इसको हम something तो नहीं कहेंगे, this is a substantial amount for their age, but you should not, I don't think the conversation should all be about the financial aspect of PJL. Not just that. Yeah. But I'm just trying to say, I'm not saying that every cricketer is coming from a struggling background. No, not at all. But what happens Yeah. is, once you know that you are contributing Yeah. to the family, then you can focus on your cricket and only on cricket, and even your gear pathway cricket आपके लिए यही कर रही है, आपके बिल्कुल, education का भी बिल्कुल। ख्याल कर रही है, आपके gear का भी ख्याल कर रही है, जो कि cricket का होता है, बिल्कुल। सामान आपने लेना होता है, plus they are letting you have some very amazing coaches around you to train you and to get you there. बिल्कुल। तो PJL की बात कर रहे हैं हम, जो कि एक T20 लीग टूर्नामेंट है, पाकिस्तान जूनियर लीग, जिसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनके मेंटोर्स अराउंड द वर्ल्ड जो हैं वो आ रहे हैं. वो 6 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से ये खेला जाएगा. बिल्कुल. और एक्स फैक्टर की पिक्स सिकंदर अभी चल रही हैं, और हम लोगों ने शुरू में भी बात की थी. एक और एलिमेंट है, अभी तक आया नहीं है हमारे सामने, इसका किसी टीम ने यूज़ नहीं किया, बट वाइल्ड कार्ड इज़ अ मिस्ट्री एलिमेंट इन इटसेल्फ. इस ड्राफ्ट में हम पहले भी देख चुके हैं PSL के अंदर इस रूल को, और ज़ैनब के पास जो है वो नाम आ गया है. तो अभी हम ज़ैनब के पास चले, अभी वी हैव अ बिट ऑफ अ टाइम, तो हम कंटिन्यू कर रहे थे एक्स फैक्टर जो एलिमेंट है उसके बारे में. एक्स फैक्टर कैटेगरी चल रही है, और एक्स फैक्टर अब मैंने बताने वाला था, लेकिन ज़ैनब कह रही है पहले मैं, तो मैं ज़ैनब के पास चलते हैं. अच्छा जी, are we ready? Are we ready? We are ready with the name. Finally, गवादर शाख से बड़ा टाइम लगा है सोच समझ के. मोहम्मद जुल्फिकार, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि काफ़ी डिलिब्रेशन हुई है और उसके बाद नाम फाइनलाइज हुआ है. सो huge congratulations to you for this wonderful opportunity that you have. And now if we can move towards Bahawalpur Royals, आपका टाइम शुरू होता है अब.
ठीक है जी, सदर्न पंजाब से पिक हुई है बहावलपुर रॉयल्स की मोहम्मद दानिश, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। यू आर नाउ पार्ट ऑफ बहावलपुर रॉयल्स, wherever you are, wherever you are listening, huge opportunity. चलो जी, Rawalpindi Raiders sitting right here, your time starts now. All right, हारून अरशद रावलपिंडी रेडर्स में शामिल हो चुके हैं और हारून अरशद will be seen in action in the PJL, so huge congratulations to Haroon. And now, if we can move on to Hyderabad, remember this is the last round, the last category, X Factor category, Hyderabad Hunters. आपका टाइम शुरू होता है अब। Fahad Amin, Hyderabad Hunters के लिए right arm medium fast bowler. Once again, strengthening the pace battery. वो सामने है, crowd में खड़े भी हुए हैं, thumbs up भी उन्होंने किए। एक बार फिर से अपनी शक्ल दिखा दें, बिल्कुल। जुनेद ज़िया साहब is blocking his face. अगर हम दिखा दें हमारे जो स्टार हैं, जो future स्टार हैं, huge congratulations to you. Right, मर्दान, are you ready? आपका टाइम शुरू होता है अब। Right, we are ready with the name Mardan Warriors, X Factor category. Who's adding that X Factor to you? Sayyid Tayyib Hussain, right-handed batsman, slow left arm, और सामने खड़े हैं, thumbs up दे रहे हैं, future star Sayyid Hussain. बहुत आपको मुबारक हो। चलें जी, Gujranwala has been making decisions rather quickly today, so let's see who they have now. Your time starts now. Right, Sakleen Nawaz, Gujarat Giants ने select किया है, right arm medium fast bowler. Sakleen, oh, he's also part of the crowd. We have a few players here जो कि already pick हो चुके हैं. Sakleen, आपको बहुत मुबारक हो. जुनेद ज़िया साहब ने फिर से आपको ब्लॉक किया है. कोई नहीं, जब बहुत स्टार बन जाओगे और बड़े स्टार बन जाओगे फिर कोई नहीं ब्लॉक करेगा. अच्छा जी,
नेक्स्ट ठीक है, ऑब्वियसली टीम फॉर्मेशंस हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता. रावलपिंडी रेडर्स, मर्दान वॉरियर्स, हैदराबाद हंटर्स, गुजरावाला जायंट्स, Kawada Sharks and Bahawalpur Royals. Remember, this is the final category that we have here. The final category, which is the X Factor category, hoping that it brings a lot of X Factor into their sides. If I can please have Gujranwala. Gujranwala Giants, aapki bari aa gayi hai and your time starts now. Right, we have a name. We're ready. Gujranwala Giants. I'm getting a thumbs up from them, so I guess they have the name. Hamza Nawaz. Hamza Nawaz भी crowd में मौजूद हैं और thumbs up दे रहे हैं. और Hamza, we want to see you in action very soon. So good luck. And I'm really glad कि यहाँ पे सारे वो players मौजूद हैं. They're getting, you know, there's a face to the name as well. People get to see who they'll be seeing in action. So I'm really, really glad कि यहाँ पे कुछ players already मौजूद हैं. ठीक है जी मर्दान, आप तैयार हैं? मर्दान यहाँ पे हैं. Mohammed Sami is giving me the nod. Abdurrahman Saab, they're all ready. Your time starts now. Right, Mardan Warriors. शाहजेब खान यहाँ पे नहीं मौजूद, लेकिन मर्दान वॉरियर्स के लिए खेलेंगे. And we'll soon be seeing him in action. Hyderabad, are you ready? आपका टाइम शुरू होता है. हैदराबाद हंटर्स नाउ. पहले से ही मुझे थम्स अप मिल रहे हैं. कई टीम्स पहले से ही थम्स अप दे देती है that they are already sure of what they're going to get. राइट हैदराबाद हंटर्स, टाइम तो आपका खत्म हो गया है, तो स्टिल वेटिंग ऑन अ नेम. ठीक है जी, वी हैव द नेम. कैन वी हैव इट? राइट हैंडेड बैट्समैन हैदराबाद हंटर्स ने सिलेक्ट किया है सलमान अहमद को. सलमान अहमद, आप यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, इस वक्त मौजूद नहीं है, बट we'll see you in the PJL.
Congratulations to Salman. And if we can now look at Rawalpindi. Rawalpindi, are you ready? Raiders, are you ready? Your time starts now. ठीक है जी. Raiders has already selected who they want. Naveed Ahmed Khan. He's an off spinner and very handy, as we know, especially in this format. Is he here? Is he here somewhere? No, he's not here. But huge congratulations, and I'm sure you'll add another dimension to the side. As we know, आजकल off spinners हमेशा से ही जो हैं बहुत handy होते हैं, especially to left-handed batsmen. The way we see them, they're always very effective. Okay ji, Bahawalpur, your clock starts now. Acha ji, Bahawalpur Royals, Ahmed Hussain, who's a left-handed batsman, and he bowls as well, and he's in the crowd. There you go, with the thumbs up. Huge smiles on his face, and बहुत बहुत आपको मुबारक हो. We'll be seeing you in action. He's all for the camera. He's all smiles right now, and I hope that he can contribute towards his side really well. जी गवादर शार्क्स, इस बार रेडी है या थोड़ा सा टाइम चाहिए? चले, आपका टाइमर स्टार्ट होता है. लेट्स सी. राइट, गवादर शार्क्स, दिस इज अ रिकॉर्ड. इतनी जल्दी डिसाइड कर लिया, यानी आप पहले से ही श्योर थे आपको कौन चाहिए. चलें जी, दिखाएं नाम. अदनान इकबाल, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर. ही इज आल्सो देयर इन द क्राउड. ह्यूज कांग्रेचुलेशंस. आई एम श्योर दैट आपकी फैमिली देख रही होगी, आपके पेरेंट्स देख रहे होंगे, एंड दे मस्ट बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू. I love the energy that these young kids bring to the table. I have to say that they've been wonderful. अच्छा जी, ठीक है जी. कुछ ही देर बाकी है, अब कुछ ही राउंड्स बाकी हैं, और काफ़ी जो टीम की कॉम्पोजिशन है वो बन गई है. The squads are pretty much certainly getting there. We're certainly getting there. And now we are here for the last round of the draft. So it's taken us a while to get here, but we'll start once again with Gujarat Giants, and your time starts now. Right, all players that will be picked in this round will be from associate members. That is the briefing, that is what we have for the teams. Associate members, all the picks will be for this round be from associate members. We have the name? Right. Matthew Trump, who's a bowling all-rounder from USA. Yes, United States of America जो है,
उनका भी जो है एक डेब्यू हो रहा है PJL में. So fantastic to see that this is truly a global stage where you have players from all around the world involved, and of course, who doesn't need a good, decent all-rounder in their side? Okay ji, Gavadar, your time starts now. Gavadar ab bahut efficient ho gaye. Now they just know exactly who they're getting. Your time starts now, please. अच्छा जी, इधर से तो मुझे thumbs up आ गया है. That means कि जल्दी से नाम भी जो है, that will also be revealed. Do we have the name? Right, Kushal Mala is the only player from Nepal to feature in this league. A huge congratulations to Kushal. ठीक है जी, रावलपिंडी, आपका टाइम शुरू होता है अब. ठीक है जी. Right, wicket-keeper batsman from England, Charlie Tier. Charlie Tier, huge congratulations to you. You made it to PJL. He played for Scotland as well, Charlie Tier. So huge congratulations to Charlie Tier. Hyderabad, we're moving on to you. Hyderabad, are you ready? Your timer starts now. Hyderabad Hunters have already made their choice. If we can please have the name. United Arab Emirates say Ali Naseem, the bowling all-rounder. Played under 19 for Emirates. So fantastic to see that he'll now be featuring in the PJL. Right, Mardan, आपकी तरफ चलते हैं. I know कि आज काफ़ी hectic day रहा है सारी teams के लिए, but your time starts now. You have to make the choice in this last round that we have today at the PJL. Right, Mardan Warriors. Can we have the name, please? Right, bowling all-rounder Burhan Niaz, the only player that we have from Belgium. All the way from Belgium. Fantastic to see
that we're going to see him in PJL. Burhan, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. I'm sure you were waiting for that moment कि मेरा नाम कब आएगा. तो अब आ गया है और अब आप मैदान के लिए खेलेंगे. चले जी. Now, it is the last pick of today that we have for you. And it is Bahawalpur Royals. ये आखिरी pick है दिन की, इस draft की. It's been absolutely fantastic having everyone. Bahawalpur, your time starts now. They're making all those faces as if they're very worried. I'm pretty sure that they've already made the choice. You've already made the choice, haven't you? I can see the smiles. They're throwing away all the papers. अच्छा जी, नाम है हमारे पास कि नहीं? Right, Bahawalpur, can we please have the name? Right, can we please have the name? Gabriel, Coleman, Findlay. He's a wicket-keeper batter from Scotland. So a bit of Scottish flavor as well in PJL. Thank you so much, Bahawalpur Royals. And before we end, obviously, this evening, this fabulous evening, if I could please call upon Mushtaq Ahmed Sahab to come forward and announce who their captain is going to be. So हम सबके कैप्टन्स हमने देख लिए हैं, जर्सीज भी दी गई हैं, गिफ्ट की गई हैं. So मुश्ताक अहमद साहब आएंगे और अनाउंस करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. शामिल हुसैन को हमने अपना कप्तान बनाया है टीम का. वेरी प्रॉमिसिंग इंशाल्लाह एंड वेरी टैलेंटेड लेफ्ट हैंडर बैट्समैन. आई बिलीव इन हिम. अंडर 16 से मैं इसको देख रहा हूँ. बिफोर आई फिनिश, लेट मी गिव यू माई पीस ऑफ माइंड. ये जो अंडर 19 की क्रिकेट हो रही है, आई वांट टू गिव दैट क्रेडिट टू द पीसीबी, स्पेशली रमीज़ भाई को. इसका एडवांटेज मैं बताता हूँ क्या होता है. लॉट्स ऑफ पीपल आर क्वेश्चनिंग कि जी इनकी टेक्निक ख़राब हो सकती है, यू नो, लाइक दे कैन हैव अ रॉन्ग बेसिक्स अर्ली ऑन. बट आई बिलीव दैट इफ़ आई टेक माई मेमरीज बैक, स्कूल लेवल के ऊपर जब हम क्रिकेट खेला करते थे, 2 स्कूलों के सामने परफॉर्मेंस करते थे, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू परफॉर्म फ्रंट ऑफ आवर स्कूल. स्कूल के जितने भी क्राउड होता था ना, उसके सामने परफॉर्मेंस करना बड़ा मुश्किल होता है. जब ये बच्चे इतनी मुश्किल कंडीशन में से जब बड़े होकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, आई बिलीव पर्सनली कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल और टेम्परामेंट लेवल तगड़ा हो जाएगा. और जब प्रेशर में जब ये खेला करेंगे तो दे विल बी सेकंड नेचर टू देम. बेस्ट ऑफ लक. मे अल्लाह ब्लेस पाकिस्तान. थैंक यू जी. बहुत बहुत मुबारक हो कप्तान साहब को. ही इज बीन अनाउंस्ड as the captain, left-handed batsman. Thank you so much. And now, if I can please call upon all the team head coaches and the skippers to come on stage for a group photo. It's been a wonderful evening having all of you making all the wonderful pics. बहुत बड़े-बड़े नाम इसमें मौजूद हैं इस junior league में. And I'm really happy to see that they've made some fine picks for the day. Obviously, these are the players that we'll see in Pakistan cricket in the future as well, hopefully at a national level. This is where you've got your Shaheen Shahs and Naseem Shahs from. So this is the time to actually support them. And obviously, ये stage, ये platform इसीलिए है कि जब आपस में खेलेंगे तो इनको वो exposure मिलेगा और इनकी skills enhancement होगी. What a stage do we have here. Fantastic to have all these gentlemen involved. Bright young stars, captains are on the stage as well. आहिस्ता आहिस्ता जब ये perform करेंगे तो और भी इनके बारे में मज़ीद पता चलेगा. Thank you so much. Thank you so much, everybody. Thank you for a wonderful evening.
And I hope you guys enjoyed today's coverage. And I'll take it now to the studio people to talk more about all the players that we've had here in the PJL draft. Amazing, really amazing. This will go in history because this is the first time this platform has been set by any cricketing nation, full member nation. And to introduce that, to launch that today is a dream of the chairman, of course, of the Pakistan Cricket Board and his people who worked very hard to bring this to life. And today is the birth of Pakistan Junior League. Of course, some very heartwarming and stunning visuals there. A confetti rain. You know, it's the perfect wrap up to today's events. एक बहुत amazing event हमें देखने को मिला. And of course, first of its kind under 19 age group की league करवाई जा रही है from Pakistan. So, you know, definitely, as Zainab said, that this is where you will get your Naseems and Shaheens and Baburs from. So I'm very excited and I'm very hopeful because इनके चेहरे, the ones who've gotten picked, उनके चेहरे पे वो hope चेहरा बोला है मैंने. आई एम श्योर आप ज़ैनब भी बोला इधर देख के नहीं मैं आपको नहीं, मैं ज़ैनब की एक्चुअल बात को मैं कंटिन्यू करी थी बिकॉज शी डिड से कि चेहरा सही है. हाँ, सिकंदर हैज बीन करेक्टिंग माय उर्दू टुडे बट नॉनदलेस वेरी होपफुल दीज गाइज लोग, यू नो, एक उनके चेहरे पे एक वो खुशी है और एक वो प्रॉमिस है कि कुछ बड़ा करना है और ये उनका आज टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स. जी मुख्तलिफ हमने विजुअल्स देखे, कुछ हैरान हो गए जब नाम आया, कुछ के आंसू हो गए और कुछ बहुत ज़्यादा खुश थे. और उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं, कुछ लोगों की मुझे भी कॉल्स आ रही थी. आई थिंक आपके माइक के साथ थोड़ा इशू है. आई थिंक देर नॉट एबल टू हेयर यू प्रॉपरली. वी विल गेट दैट सॉर्टेड. बट ये इख्तिताम पे आया है आज का जो इवेंट है. अभी लेट्स हैव अ लुक एट हाउ द टीम्स आर स्टैकिंग अप एज ऑफ नाउ. पिक्स जो हैं वो हो चुके हैं तीनों राउंड्स की, स्टार्टिंग विद बहावलपुर रॉयल्स. प्लीज फरहान बताइए, भावलपुर की टीम मैं आपको दिखाता हूँ. ये स्क्वाड है भावलपुर रॉयल्स का. ये 15 उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, एलीट, प्रीमियर और एक्सपेक्टेड. ये इसमें कुछ ऐसे नाम है, अरम नवाब है, वैद शाहिद, सजाद अली, ये थोड़े प्रोमिनेंट नाम है पाकिस्तान के 19 क्रिकेट के. अली रज़ाक ऑलराउंडर हैं, वासिद अली जिनका ताल्लुक कोयटा से, और फिर रेहान अहमद की मैंने पहले भी बात की थी. ये राइट. सॉरी फरहान, अभी भी थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है विद योर माइक. वी विल गेट दैट सॉर्टेड बट नॉनदलेस अ वेरी balanced team there. Sikandar, Bahawalpur have gotten all their bases covered, it seems. काफ़ी international experience भी उन्होंने cover कर लिया from the Caribbean, from England. So of course एक अच्छा mix of players हमें नज़र आ रहा है. You can see that in the lead you got a player from the Caribbean. In the Premier they have from Afghanistan and from the UK. And down in the X Factor they've got someone from Scotland. That was one of the final picks of the day. So the balance looks good. And the categories, as we know, like 5 and 6 from elite to premier. Gujarat Giants, this is the one which Shoaib Malik is mentoring. And इनके भी काफ़ी ज़बरदस्त टीम नज़र आ रही है यहाँ पर. फॉरेन प्लेयर्स में बांग्लादेश और श्रीलंका के प्लेयर्स भी शामिल है. USA के प्लेयर्स मैथ्यू ट्रॉम्प भी हैं. एंड मैं बहुत श्योर हूँ कि अब तीसरी बार आपकी आवाज़ पहुँची जाएगी. जी हाँ, बिल्कुल अब पहुँचेगी. और इसमें भी अली असफर, रज़ान अवैस, इन्होंने अंडर 19 का जो फाइनल था उसमें सेंचुरी की थी. उसके अलावा एक्स फैक्टर में हमजा नवाज़, ये बाएं हाथ के बड़े अच्छे बैटर हैं. हसन अली जूनियर जो हैं, ये हसन अली की तरह ही फास्ट बॉलिंग करते हैं. तो ओवरऑल देखें तो गुजरावाला, और इसमें अच्छी बात यह है कि इनके ज़्यादातर प्लेयर उस एरिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं, सियालकोट, मंडी, बाउद्दीन, कि जो गुजरावाला की डोमेन में आते हैं वो प्लेयर्स काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये कवर रखा है गुजरावाला जायंट्स ने. चले अगला स्क्वाड देखते हैं. ये तो हमें काफ़ी बैलेंस्ड लग रहा है. अ गुड मिक्स ऑफ प्लेयर्स. गवादर शार्क्स, दिस इज़ हाउ दे स्टैक अप एज ऑफ नाउ. फरहान, क्या कहते हैं इनके पिक्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी डिलिब्रेशन कर रहे थे ये आज विद देयर पिक्स. जी हाँ, इनका थोड़ा सा, क्योंकि इनके जो कप्तान हैं शामिल हुसैन, ये बिल्कुल आखिरी राउंड्स में पिक हुए हैं. तो नॉर्मली यही होता है कि कप्तान अब शुरू में पिक करते हैं, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे लग रहा है. और ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा इनका जोर है. अरफात मिनहास हैं, दानियल इब्राहिम की हमने बात की कि इनके फादर पाकिस्तान को अंडर 19 में रिप्रेजेंट इन्होंने किया हुआ है. तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी इनकी टीम बैलेंस लग रही है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लिया गवादर ने इन प्लेयर्स को पिक करने में. बिल्कुल अच्छा बैलेंस्ड स्क्वाड लग रहा है. लेट्स सी मर्दान वॉरियर्स एंड हाउ दे लुक आफ्टर द ड्राफ्ट. ऑफ कोर्स
another good mix of players. इंग्लैंड के काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो फीचर कर रहे हैं. ये भी एक अच्छा साइन है कि उनका भी जो काउंटी का एक्सपीरियंस है वो हमें देखने को मिलेगा. ऑली कॉक्स भी हैं मर्दान के साथ. तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे छोटे शहरों की रिप्रेजेंटेशन के लिए बाहर इंग्लैंड से और बाहर के मुल्कों से प्लेयर्स आ रहे हैं. सो दैट्स आल्सो वेरी पॉजिटिव साइन. जी मर्दान के लोगों ने नहीं सोचा होगा कि इंग्लैंड के प्लेयर आके उनकी सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे. और इंग्लैंड का यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ अरसे से जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है जूनियर क्रिकेट पे. तो ये मर्दान के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये तमाम वो खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. हैदराबाद हंटर्स की आज के हंटेड प्लेयर्स जो हैं वो देखते हैं. ऑफ कोर्स अनदर गुड सेट ऑफ प्लेयर्स. इनके भी काफ़ी लोकल प्लेयर्स जो है इन्होंने रखे हैं एक्स फैक्टर के अंदर. और साद बेग इनके कैप्टन हैं. अ गुड लुकिंग स्क्वाड. फरहान अभी पीछे हमारे जो नॉइज़ आप सुन रहे हैं ना वो इस वक्त जो प्लेयर्स हैं उनकी आपस में you know they've been sitting like very good boys all day long. So now they're networking, now they're sort of mixing together. तो एक अच्छा end जो है वो फिलहाल. Last but not the least, let's look at Rawalpindi Raiders. Wow, इनके भी काफ़ी local players heavy हैं इनके X Factor squad में. लेकिन otherwise they have the likes of Kai Smith and of course Habibullah, another very interesting name. तो ये भी एक अच्छा कंपेरेटिव स्क्वाड है. जी हाँ, इन्होंने जो टॉप परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक के उन पर ज़्यादा भरोसा किया है. काइस पे कीपर हैं ये इन्होंने लिए हैं. तो ओवरऑल इनकी टीम भी वहाज रियाज ये जो सारे नाम तो हम नहीं ले सकते लेकिन बड़ी अच्छी बैलेंस टीम जो है वो दिखाई दे रही है. और रोहा जो चेयरमैन साहब ने फाइनेंशियल की बात की थी तो ये प्लेयर्स कुछ और स्टेटस के साथ आए थे कुछ घंटा पहले यहाँ पर ड्राफ्ट में और जब ये जाएंगे तो इनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत चेंज हो गया होगा. बिल्कुल. दे हैव अ लॉट ऑफ रीजंस टू बी हैप्पी टू सेलिब्रेट their success because this is definitely the start of their journey. It is a very beginning. और सिकंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग डे ऑफ पिक्स हमें देखने को मिला. बिफोर वी रैप अप गिव मी अ वन लाइनर. आप अपने तासुरात अगर ब्रीफली बताएं अबाउट the junior league before we go. In one line. That is the challenge because we're short on time, so we have to wrap up quickly. चलिए मुझे खुशी इस बात क्योंकि ऐसी कुछ नेशंस दिखी हैं जिनका क्रिकेट फर्स्ट स्पोर्ट नहीं है शायद, जिसमें नेपाल भी हैं, जिसमें यूएसए भी हैं और एक और यूरोपियन कंट्री है इफ आई एम नॉट बेल्जियम से भी एक प्लेयर हैं. बाकी आपके ऑफ कोर्स श्रीलंका से, बांग्लादेश से और डिफरेंट क्रिकेटिंग नेशंस जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के हैं उनके तो प्लेयर्स फीचर कर ही रहे हैं. हमने काफ़ी बात की है कि ये प्लेटफॉर्म क्या है और क्या मायने रखता है यंगस्टर्स के लिए. आई थिंक सबसे बड़ी सेलिब्रेशन ये है कि ये एक ख्याल था, ये एक सोच थी और आज वो हकीकत है. और 6 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ये आप देख सकेंगे. ये लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा जिसमें 19 मैचेस होंगे 6 टीमों के बीच. बड़े बड़े नाम हैं. जावेद मियादा साहब जो हैं वो मेंटोर्स के मेंटोर होंगे और ओवरऑल देखेंगे इस सारे टूर्नामेंट को. उसके अलावा इमरान ताहिर, शुएब मलिक, विवियन रिचर्ड्स, डैरन सैमी, शाहिद आफरीदी और कॉलन मनरो इन 6 टीमों के मेंटर होंगे. बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारी एक्साइटमेंट होगी. एंड आई थिंक इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा इन क्रिकेट व्हेन यू टॉक अबाउट अंडर 19 प्लेयर्स. फरहान क्विकली बिफोर वी रैप अप, क्या उम्मीद है आपको ये जो आज प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, क्या हमें अगला फास्ट बॉलिंग स्टार मिलेगा या स्पिनर मिलेगा या कोई बैट्समैन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा. जैसे शोएब ने यहाँ पर कहा कि उनके टाइम पर भी अंडर 19 से प्लेयर आते थे लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए नहीं था. तो शायद टाइम वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता था. अब बड़ी जल्दी हम देखेंगे कि सुपरस्टार जो हैं वो PJL से आते हुए हमें अगले 1-2 साल में दिखाई देंगे. बिल्कुल 1-2 साल में हमारे ये जो खिलाड़ी जो आज सेलेक्ट हुए हैं ऑफ कोर्स अगले सीजन में जो पिक होंगे दे विल बिकम हाउस होल्ड नेम्स एंड वी जनरली कैन नॉट वेट बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड फॉर देम. आई मेट सम ऑफ देम टुडे और वही बात है कि आई कैन सी द होप इन देयर आइज एंड लेट्स सी वेयर दे एंड अप और आगे के सीजन्स में भी वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं. सो गुड लक टू देम, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ देम एंड ऑफ कोर्स टू द एंटायर टीम ऑफ पाकिस्तान जूनियर लीग. एक इंटरेस्टिंग चैलेंज जो है वो आ रहा है हमें देखने में आ रहा है in the second week of October. So a lot of hopes attached with this platform. आप लोगों का बहुत शुक्रिया for tuning in. सिकंदर आपका बहुत शुक्रिया for being a wonderful co-host as always. And फरहान आपका बहुत शुक्रिया for giving us all those trivia, all those insights. आप सबका भी बहुत शुक्रिया for tuning in. And this is the end of the Pakistan Junior League Draft 2022.
And yeah, see you on the 6th of October. It's a goodbye till then.